सर्वदा श्री पराशक्ति, सर्वदा श्री पराशक्ति, Thank you so much, sir. I would now request our distinguished delegates, Honorable Vice Chancellor, sir, Professor K.L. Srivastava, sir, our Chief Guest, Professor Sushila Shaktawat, ma'am, Dhanuj, sir, our keynote speaker for the day, Professor Anirudh Deshpande, Dr. Manorama Upadhyay, Principal, Mahila PG Mahavidyalaya, Professor S.P. Vyas, sir, Chairman, Mahila PG Mahavidyalaya, to kindly come up on the stage and take up their place on the dais. There is a saying in Korean, "Jhaonen gojo, jojinen goshianida." That is, freedom is not free. The freedom that we experience today is a result of the tireless efforts of our armed forces and military that guards our boundaries. Kautilya in Arthashastra says, "Army and treasury are two pillars on which a state is found." Military is defined by the Latin word milit, which means soldier. The military thus means a group of soldiers engaged in providing defensive as well as offensive services for internal and external security. The role of military and military strategies have shaped the history and politics of countries around the world, and we gather today to discuss and celebrate this role of military in history worldwide. I would now request our Principal, Honorable Dr. Manorama Upadhyay ma'am, to kindly come up and deliver the welcome address and address the gathering regarding the key day event. Dr. Manorama Upadhyay. Good morning to the august gathering here in the hall. Role of military in shaping history. How the idea generated. इतिहास की जब हम बात करते हैं तो जैसा कल प्रोफेसर देशपांडे जी से भी डिस्कशन हो रहा था और डॉक्टर राजेश कुमार जी से भी कि इतिहास का अध्ययन अपनी संपूर्णता में होना चाहिए। जो अब नया ट्रेंड और कंसेप्ट है हिस्ट्री के रिसर्च में या सोशल साइंसेस के रिसर्च में, वो है हिस्ट्री एज अ होल। ये सारे डायमेंशंस हैं और इन डायमेंशंस का अध्ययन जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये टाइटल जो है हमने 2 days नेशनल सेमिनार का रखा, रोल ऑफ मिलिट्री इन शेपिंग हिस्ट्री, अ स्टडी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थ्रू द एजेस। मैं इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के हमारे अध्यक्ष, हमारे फादर फिगर आदरणीय प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव साहब की हृदय से कृतज्ञ हूँ और स्वागत करती हूँ कि सर ने अभी पदभार ग्रहण किया है कुछ समय पहले ही और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो सर अभी बहुत बिजी हैं। सर आपने समय निकाला और हमें अपना आशीर्वाद दिया और आपसे हम गाइडेंस प्राप्त करेंगे और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आपका एक बार पुनः स्वागत और आभार। मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी का। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और जैसा सर से ही कल डिस्कशन हुआ था
कि कोई मिलिट्री हिस्ट्री या सोशल हिस्ट्री या इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं होती, हिस्ट्री एज ए होल है, एक डायमेंशन है। तो उस डायमेंशन के आप स्पेशलिस्ट हैं। तो आज का जो कीनोट एड्रेस है, बीज वक्तव्य, वो प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे ने देना, डिलीवर करना स्वीकार किया। इसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू अमंग्स्ट अस सर। प्रोफेसर एस के भनोट सर हमेशा हमेशा सहज मुस्कुराहट और आशीर्वाद बना रहता है। आप अभी सुबह ही बीकानेर से निकलकर यहाँ पधारे हैं और आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और हम सभी एक बार पुनः आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ, हालांकि एक औपचारिकता ही है, क्योंकि जो डायरेक्टर सेमिनार हैं, चेयरमैन जयनारायण शिक्षण संस्थान और महिला पीजी महाविद्यालय, वे इस संगोष्ठी के निदेशक भी हैं। लेकिन एक औपचारिकता है प्रोफेसर एस.पी. व्यास जी का, और आभारी हूँ कि आपने हमें 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी करने की अनुमति प्रदान की। मैं मैनेजमेंट के तमाम सदस्य, कृष्ण कुमार जी व्यास सचिव, प्रोफेसर पी.एम. जोशी सर, के.एम. व्यास जी, एन.डी. पुरोहित सर, राजेंद्र प्रसाद जी, प्रोफेसर अनिल जी, सुखबीर जी प्रेस साहब, और के.सी. दौरा साहब, जी.पी. व्यास जी, और साथ में मैं स्वागत करती हूँ, बहुत हृदय से कृतज्ञ हूँ, बाहर से जितने प्रोफेसर, स्कॉलर्स और डेलीगेट्स पधारे हैं, प्रोफेसर सोनानवे साहब, मैडम एन.एस. राव साहब और उनके मैडम, सूरज खान सर, इति बहादुर मैम, मनीषा चौधरी मैम, बंधुआ सर, रविंद्र सर, कैलाश मैम, आप सभी जो बाहर से पधारे हैं, आपकी वजह से हम इस सेमिनार का आयोजन करने में समर्थ रहे हैं। निशात मंजन मैम का तो स्पेशलाइजेशन है, रश्मि उपाध्याय मैम, और जो भी बाहर से पधारे हैं, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगी कि आपके स्टे में या कहीं कोई कमी है आपके स्वागत में या निवास में, भोजन इत्यादि में, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। आपकी व्यवस्था सुखदायक रही होगी, ऐसा मैं मानती हूँ, और यदि कोई कमी है तो वो कमी सारी जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। डॉक्टर राजेश, डायरेक्टर ICHR पब्लिकेशन एंड जर्नल, वे भी बहुत बिजी थे लेकिन उन्होंने अपना समय निकाला। स्वागत करती हूँ महिला पीजी महाविद्यालय, प्रोफेसर के.डी. गोरा विमेन लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज व्यास, महिला टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्वेता पुरोहित, महिला पीजी महाविद्यालय के तमाम टीचर्स, NSS और NCC की छात्राएं, आपसे मैं संगोष्ठी परिचय देना चाहूंगी कि ये आइडिया क्यों जर्मिनेट हुआ। हम जब सामान्य बात करते हैं मिलिट्री की, तो मस्तिष्क में एक ही पिक्चर आती है, मैगजीन्स में, अखबार में, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं कि मिलिट्री का काम क्या है, रक्षा करना। और हम सभी इतिहास के विद्यार्थी ये भली भांति जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों की देन, इंटरनल पुलिसिंग सबसे पहले बंदर ने प्रारंभ करी थी, लेकिन वो एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने पुलिस चौकियों की व्यवस्था इत्यादि करी। उसके बाद से लगाकर अंग्रेजी शासन की स्थापना तक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी का सारा जिम्मा मिलिट्री का हुआ करता था। और अभी तक जो भी हम इतिहास पढ़ते आए हैं, उसमें सेना की भूमिका इसी तरह से रेखांकित होती आई है। कितने युद्ध हुए, क्या हुआ, क्या पराजय, कौन सेनापति, ये सब हम चाहे इंटरनेशनल सिनेरियो को ले लें, चाहे रीजनल सिनेरियो को ले लें, लोकल सिनेरियो को ले लें, नेशनल सिनेरियो को ले लें, तो मन में ये प्रश्न आया कि क्या वे समाज का हिस्सा नहीं है। मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं, चाहे सामान्य सबऑर्डिन से लगाकर, सबऑर्डिन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है, और जो कॉमन सैनिक हुआ करते थे, जो बैरक में
निवास और छोटी छोटी सुविधाओं के लिए जो सामंत वर्गीय सैनिक हुआ करते थे उनके ऊपर निर्भर रहते थे, इसलिए इन्हें सबऑर्डिनेट उपआश्रयी कहा गया। तो क्या ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं इनकी कोई भूमिका नहीं है समूह के रूप में, या क्या वे समाज का हिस्सा नहीं है? क्या कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या मिलिट्री ने कुछ प्रेरित नहीं किया? केवल सीमा सुरक्षा और देश रक्षा तक, जैसा प्रियंका मैम ने बताया कि कौटिल्य कहता है कि ये आधार स्तंभ है देश की रक्षा का। तो जब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना प्रारंभ किया तो उसका सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो समझ में आने लगा कि मिलिट्री डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा क्या सोशोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन उनका है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन उनका है। हम इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के हिसाब से बात नहीं करेंगे तो भी एज एन इंस्टीट्यूशन उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है, उसका डिसिप्लिन, बिकॉज मिलिट्री ऑलवेज पोर्ट्रेज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन एंड रेगुलेटरी लाइफ बिफोर द सोसाइटी। उसमें एन ऑर्डर इज एन ऑर्डर इज एन ऑर्डर, उसका वायलेशन नहीं है। एक हायरार्की है, उसको हमें स्टडी करना चाहिए। साथ में समाज को क्या कंट्रीब्यूशन है एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी। हम जनरली देखते हैं कि मिलिट्री एरियाज अलग होते हैं और सोशल इन्वॉल्वमेंट उनका बहुत ज्यादा नहीं होता, आपस में ही उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, लेकिन दे हैव फैमिलीज, उनका इंटरेक्शन किस तरह का है। जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार के रिएक्शंस क्या हैं, सोशल स्टैंडिंग क्या है, क्या हमें इसका अध्ययन नहीं करना चाहिए। हाउ मिलिट्री क्रिएट्स इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयबिलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसे आती है। वेटरनरी आप देखिए, यदि हम जो बहनियां हैं, विशेष करके जब मैंने वो अस्त्र शस्त्र की बहनियां है उसका अध्ययन किया, तो क्लास ऑफ आर्टिजन्स जो है वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिजन्स है जो कारखानों में काम करते हैं, तो उसको वो संरक्षण करती है। एंड दैट आर्ट इज बीइंग मेड पॉपुलर, चाहे वो डोमेस्टिक स्वर्ण बनाने का हो, चाहे वो लेदर उसकी कवरिंग बनाने का हो, उसकी एम्बेलिशमेंट्स का हो, ये सारी जो एक क्लास ऑफ आर्टिजन्स हैं उनको पेट्रोनेज मिलता है कारखानों में। आउट ऑफ मेटलर्जी, आप इमेजिन कीजिए जब मेटल को शुद्ध करने की साइंटिफिक प्रक्रिया जो आज हम दावा करते हैं, हम अपने आप को बहुत साइंटिफिक मानते हैं, वो नहीं थी, तो कैसे तलवारें बनती थी और उनके अलग अलग नाम, उनकी धार के हिसाब से, उनकी शार्पनेस के हिसाब से, उनके शेप के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। बंदूकें, तोपें, ये सारी आर्ट ऑफ मेटलर्जी है और उसके लिए कोई साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे। परंपरागत रूप से आर्टिजन क्लास में ये जो है आर्ट और साइंस चला करती थी। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय का कंप्यूटराइज सिस्टम्स नहीं थे, सारा मैनुअल था, उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप थी, उसे हमें देखना होगा कि हाउ मिलिट्री हैज सपोर्टेड टेक्नोलॉजी। और मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, प्रोफेसर देश पांडे मुझे सुधार करेंगे अगर मैं गलत हूं, जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है और रिसर्चेस हुए हैं वो पहली बार मिलिट्री एरिया में हुए हैं। चाहे हम परमाणु बमों की बात करें, चाहे हम सबमरीन्स की बात करें, हालांकि ये डिस्ट्रक्टिव वेपनरी है, लेकिन जितना एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च मिलिट्री में है उतना ही एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च मेडिकल साइंसेज में है। शायद मेडिकल साइंसेज थोड़े पीछे, और हर एक देश कम से कम अपनी जो नेशनल इनकम है उसका 25 से 35% डिफेंस पर खर्च करता है मिनिमम। इन सब पर हमें ध्यान देना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, चाहे वो मिलिट्री हायरार्की हो, चाहे उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, MES इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्पाइस, पूरा स्पाई सिस्टम जमाने से
जब से सेना बनी तब से स्पाई सिस्टम चला आ रहा है। तो ये सारी चीजें किस तरह से एस्टाब्लिश होते थे, किस तरह से वो काम करते थे, ये कंट्रीब्यूशन जो रिटन है सारे, प्लस सोसाइटी को वो कैसे प्रेरित करते हैं कि एक एग्जाम्पल रखते हैं कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए। साथ में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हम टेम्पल आर्किटेक्चर जब देखते हैं तो मिलिट्री का डिपिक्शन जो है वो पैनल्स के रूप में होता है। हमारे जितने देवी देवता हैं उनके सब आयु से युक्त हैं, सभी, और सबके आयु अलग अलग है जो वेपन्स हैं। तो ये कहां से आया? आर्ट हमेशा सोसाइटी में जो कुछ भी है उससे डिपिक्ट होती है। तो कैसे आर्ट को मैंने प्रेरित किया। साथ में डिफेंसिव आर्किटेक्चर, मिडिएवल इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिफेंसिव आर्किटेक्चर का। किला बंदी और किलों का निर्माण किसके लिए था? रहवासी किले अलग थे और डिफेंसिव फोर्स अलग थे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कितने प्रकार के किले हैं, लेकिन डिफेंसिव जो किले हैं उनका प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी कैसे करना। मेहरानगढ़ की ही बात करें तो पहले पचेटिया हिल पर बनना था, लेकिन वो विंड डायरेक्शन में नहीं था तो पानी की कमी हो सकती थी और पहाड़ कच्चा था, तो इधर जो है उसको सेलेक्ट किया गया, साइड चेंज की गई। तो कैसी प्लानिंग होती है उसकी। यदि हम मास्टर प्लान देखते हैं किलों के तो बहुत आश्चर्य वाली बात है कि उस जमाने में के जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनकी सोच कितनी साइंटिफिक होगी। विदाउट एयर कंडीशन अंदर हवा बह रही है। यदि आप किले बनाएं तो जो आर्म एंड आर्मामेंट्स का सेक्शन है उससे जब हम नीचे घुमावदार सीढ़ियों पर उतरते हैं तो आपको अपना बस हिलता हुआ महसूस होगा और हवा का तेज झोंका आपको अपने पैरों में फील होगा। यदि हम उसको नीचे से झांक के देखते हैं तो आगे से आगे चैनल बनी हुई है और वो किले की बाहर की दीवार तक चैनल जाती है, वहां से जो विंड पैसेज है वो बन जाता है और वो पूरा इंटरनल एरिया जो है वो ठंडा रहता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स किस तरह के होते थे? आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कंप्यूटराइज्ड सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर, लेकिन उस जमाने में जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे होते थे? फील्ड थाने, कैवलरी, रेजिमेंट्स का डिवीजन, इन सब का मैनेजमेंट कैसे होता था? और सबसे बड़ी बात, आर्मी जब मूव करती थी तो आर्मी कैंप्स का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ आर्मी कैंप्स, खाना पीना, रहना, वेपन्स, मेडिकल फैसिलिटीज, एक पूरा जो है स्टेट साथ चल रहा है ऐसा लगता था। ये सब चीजों को हमें देखना होगा। साथ में कैंटोनमेंट जो पहले प्रारंभ हुए तो कैंटोनमेंट अपने आप में एक अलग सोशल सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम की बात नहीं करें, एक अलग सोशल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिमेंट्स का आपस में व्यवहार, सोशल बिहेवियर, किस तरह से कैंटोनमेंट टाउनशिप्स में कन्वर्ट होते हैं और टाउनशिप्स में कैंटोनमेंट टाउनशिप्स जो है नसीराबाद की छावनी या अभी हमारे मॉडर्न जो है जोधपुर में तो बहुत बड़ी छावनी है, वो किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करते हैं, किस तरह से वो ट्रेड और कॉमर्स को जो है वो प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन कहाँ से आता है, अनाज कहाँ से आता है, ये सारा हमारे रिकॉर्ड्स में है। तो एक पर्पस जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उससे अलग एक सोच हुई कि एक सोशियोलॉजिकल स्टडी की जाए रोल ऑफ मिलिट्री इन शेपिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री से यहाँ मेरा तात्पर्य हिस्ट्री एज ए होल से है, केवल एक डिफेंस और सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए शेपिंग हिस्ट्री जो है वो शब्द उसमें जोड़ा गया कि एक युद्ध का इतिहास बनाने में मिलिट्री कैसे कार्यरत है और जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं, चाहे वो सोशल सिस्टम हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, मिलिट्री का अपना एक कल्चर होता है, उनके अपने बैंड्स होते हैं, उनके रेजिमेंट्स के एम्बलम्स होते हैं, उनका एक बड़ा सिंबॉलिक जो है वो
मीनिंग होता है और हर एक रेजिमेंट जो है अपने उस सिंबल से गाइडेड होती है। जैसे मारवाड़ का जो एम्ब्लम था रणबंका राठौड़, वैसे राठौड़ जो रण में हमेशा खेत रहे और जो जीते, तो इस तरह के मिलिट्री एम्ब्लम जो है उनकी भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रेजिमेंट का नारा अलग है, वो किससे प्रेरित है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सोशियोलॉजिकल स्टडी के लिए हमें प्रेरित कर सकती हैं और समाज से किस तरह से मिलिट्री का जुड़ाव है, किस तरह से सोसाइटी को उनका कंट्रीब्यूशन है, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, रिलीजन। एक बड़ी जो है बहुत बड़ी बात जो हमें मिलिट्री में दिखलाई पड़ती है जमाने से लगाकर आज तक, वो है रिलीजियस लिबरलिज्म। आप देखें किसी भी फेथ, किसी भी कौम, किसी भी देवता को मानने वाला, किसी भी ईश्वर को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन युद्ध के समय सब इकट्ठे होकर पूजा करेंगे। तो एक जो रिलीजियस लिबरलिज्म है और डिवोटिव पैटर्न है, उसको भी हम अध्ययन कर सकते हैं, किस तरह से वो समाज को प्रेरित कर सकते हैं। पूर्व में भी करते थे, अभी भी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमेशा मिलिट्री काम करती रही है। आज भी हम देखते हैं तो कैंटोनमेंट एरिया सर्वाधिक ग्रीन है। और दूसरा, महिलाएं, फेमिनिस्ट स्टडी थोड़ी हम कर सकते हैं कि हम जब फेमिनिज्म की बात करते हैं तो महिलाओं के सब्जुगेशन का एक बहुत बड़ा साधन है उसका गौरव। कैसे मिलिट्री में जीतने वाली सेना, जो हारने वाली सेना है, उनकी महिलाओं का रेप करके उनमें अपना बीज आरोपित करती है कि ये हमारी विक्ट्री पूरी हुई, हम आपका देश छोड़ भी देंगे, आपकी महिलाएं हमारी जनरेशन को जन्म देंगी। कैसे कैंटोनमेंट एरियाज में प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिलता है, ये भी एक पक्ष है उसका। नॉट एवरीथिंग इज गुड, प्लसेस और माइनसेस दोनों हैं। तो एक फेमिनिस्ट स्टडी भी हम कर सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से प्रभावित होती हैं युद्धों के कारण और युद्धों के परिणामों के कारण। एंड द वुमन बिकम्स द वीकनेस एंड अ रीजन फॉर सब्जुगेशन ऑफ विमेन। ये रूप उसकी ताकत भी है क्योंकि वो अपनी जनरेशन को पैदा करती है और यही इसकी अधीनता का कारण है। इस तरह से भी स्टडी की जा सकती है। जब ये सारे एस्पेक्ट समझ में आए तब चेयरमैन सर के साथ डिस्कस हुआ कि सर क्या इस पर सेमिनार किया जाए। इसलिए इस टाइटल ने शेप लिया रोल ऑफ मिलिट्री इन शेपिंग हिस्ट्री, अ स्टडी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थ्रू द एजेस। आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस संगोष्ठी में पधारे और इस महाविद्यालय तथा संगोष्ठी की शोभा बढ़ाई। और आशा करती हूँ कि जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स होगी वो टाइटल के अनुरूप होगी और कई नई बातें जो है हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे इतिहास में सेना के योगदान को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. This brief introduction itself was very enlightening, and I hope all the delegates who will be participating in the two-day workshop will benefit from it. We are indeed very fortunate to have Professor Honorable Vice Chancellor K.L. Srivastava sir with us today. Sir, it is an honor that we have your eminent presence with us, and we sincerely thank you for taking out time from your busy schedule and guiding us today. A very brief introduction to this very humble personality. Professor K.L. Srivastava has an illustrious career of more than 25 years. He is the Vice Chancellor at Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, also the Pro Vice Chancellor at Bhagwant University, Ajmer. He has been a professor for 18 years, Head of Department Geology, Jai Narayan Vyas University for 7 years,
an academic counselor for 25 years. He has received many accolades at national and international levels, including Excellence in Science and Technology, Indian Science Congress, Government of India, and this award was presented to him by Honorable Minister of Science and Technology on behalf of Prime Minister. He has been awarded Bharat Ratna APJ Abdul Kalam Gold Medal Award, the Degree of Merit IBC Cambridge, and Special Recognition Award at Atlanta, USA. He has published more than 140 research papers in high-impact journals and conferences. He has chaired and been a keynote speaker for more than 20 conferences worldwide. He has supervised more than 17 PhDs, DSCs, and has been a presidential speaker for many occasions. He has been a fellow and president at Indian Science Congress Earth Science Section, founder of the South Asian Association of Economic Geology, fellow of Geological Society of India, and also associated with 17 different scientific societies around the world. Sir, it is an honor to have you, and I kindly request you to guide us with your pearls of wisdom. Please give a very big round of applause. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा पहला धन्यवाद जाता है अनाउंसर मैडम को, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। सबसे बड़ी सच्चाई यहाँ पे ये है कि इस हिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में अगर कोई सबसे अज्ञानी व्यक्ति है, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। एक फैशन है, ये कहा जाता है कि जो मुख्य अतिथि, अरे मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ ये सच्चाई है कि मुख्य अतिथि के रूप में ठीक है मैं वाइस चांसलर हूँ, लेकिन हिस्ट्री के बारे में जो मेरा ज्ञान है वो गारंटी से कह रहा हूँ कि यहाँ पीजी के स्टूडेंट्स और हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, उन सबके सामने मेरा सबसे कम है। सबसे पहले मैं मंचासीन अनिरुद्ध देशपांडे साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के इस महान कॉलेज में इस सेमिनार में उपस्थित होना स्वीकारा है। मैं आभारी हूँ इसके भानोद साहब का जो बीकानेर से यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारी विदुषी प्रिंसिपल साहिबा मनोरमा उपाध्याय, मेरे अभिन्न मित्र करीब 40 साल से एसपी व्यास और सभागार में उपस्थित बाहर से पधारे हुए विद्वानों के अलावा हमारे लोकल मेरे अभिन्न मित्र हेमंत शर्मा जी, डॉक्टर विनीता परिहार जी, प्रोफेसर के व्यास जी, अनिल व्यास जी, सुखवीर जी, सबके नाम ना ले पाऊंगा। इस विद्यालय से मेरा संबंध, गहरा संबंध 88 से, मैं इसका अभिन्न अंग हूं। जब इस महाविद्यालय की शुरुआत हुई थी तब मुझे याद है एडी बोरा साहब, जेके व्यास साहब और प्रोफेसर साहब ने इसकी शुरुआत करी थी। और मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी पत्नी होम साइंस की प्रोफेसर थी। यहाँ बैठे कई लोगों को याद है, शायद रश्मि जी उपस्थित है, विनीता जी उपस्थित है। उन्होंने यहाँ होम साइंस पढ़ाना शुरू किया, सालों साल बिना पैसे के। ईश्वर की कृपा थी कि हम लोग सक्षम थे कि हमें उस पैसे की आवश्यकता भी नहीं थी। और यहाँ पे उस सारी चीज की शुरुआत 88 में हुई। जेके व्यास साहब जी मुझे बहुत प्यार करते थे। उनका ये कहना था कि मैं तुम्हें चुन के एकेडमिक काउंसिल में भिजवाना चाहता हूँ ताकि इस बिल्कुल शुरू हुए कमरे से विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, वो एकेडमिक काउंसिल के द्वारा निवारण हो सके। और उन्होंने मुझे पहली बार 1988 में एकेडमिक काउंसिल में भिजवाया। आभारी हूं मैं इतने महान हस्तियों का,
सौभाग्य है कि साथ ही साथ मुझे रिसर्च करने का मौका, जो एक महान नाम यहाँ पे है। विषय पढ़ाऊं तो सबसे पहली बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण विषय जिसको इलेबोरेट करके मैडम उपाध्याय ने बताया, कितना ससमयिक ये विषय। ससमयिक इसलिए कि ये चीजें इतिहास की कभी भी डाइल्यूट नहीं हुई हैं। मुझे ऐसा इसलिए मालूम है, फिर मैं व्यक्तिगत हो जाऊंगा, कि मेरे अपने पिता हिस्ट्री के प्रोफेसर, और जब मैंने हाथ संभाला तो मैंने पूरी कथाएं नहीं सुनी। कभी नेपोलियन की कहानी सुनी, कभी क्लियोपैट्रा सुनी, कभी इस तरह की कहानियां सुन के मैं बड़ा हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की सारी कहानियां सुन के बड़ा हो पाया। सैन्य का इतिहास के विस्तृत रूप में, जैसा कहा जा रहा था, विस्तृत रूप में समाज की हर सामाजिक आस्पेक्ट को कवर करते हुए जो इतिहास के रूप की बात की जा रही है, अद्वितीय रोल हमेशा सैन्य का रहा है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, देश के अंदर हमारा बहुत कुछ होता रहा, चाहे गांधी जी के कंट्रीब्यूशन हो या उस समसामयिक जो भी कंट्रीब्यूशन होते रहे हो, लेकिन जब हम सैन्य की बात तो वो शुरुआत पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी की म्यांमार, बैंकॉक, सिंगापुर, उस रास्ते से पहली बार सेना बना के ही, यानी भारत की आजादी की पहली सेना भारत के बाहर बनी, और उस सैन्य शक्ति ने अपनी शक्ति की जो रणनीति की भारत की आजादी में दी, उसे पूरी नहीं हो सकता। सेना के कई तरीके के कई रोल इतिहास में। अब भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री में भी अति मॉडर्न की बात करें, अति आधुनिकता की बात करें, तो 42 का वो जिस तरीके से एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब हैंडीकैप राजा के लिए जब वो काम करते थे, उन्हें खरीदा और बेचा जाता था सेना के रूप में, उससे इतिहास बना करता। युद्ध क्षेत्र में किसी भंडारी की सेना को अगर खरीद लिया जाए और उस युद्ध का निर्णय ही उल्टा हो जाए, तो सैन्य की शक्ति के बारे में और कुछ कहने की आवश्यक नहीं है। एक महान कहानी है क्लियोपैट्रा में, सैन्य शक्तियों की किस ऊंचाई, किस उच्च स्तर से वो कहानी शुरू होती है और उसका कैसा दुख भरा अंत। क्या उसमें सेनाओं के सारे रोल महत्वपूर्ण नहीं थे? मुझे एक अवसर मिला, आपने भी शायद देखा होगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात होगी चाइना की, लास्ट एम्परर। फिल्म का नाम है लास्ट एम्परर। इसको मिले तो 8 ऑस्कर थे, और मेरी राय में आज तक मैंने जीवन में जितनी फिल्में देखी हैं, देशी विदेशी, शायद सबसे अच्छी फिल्मों से प्रभावित। लास्ट एम्परर चाइना वाली की कहानी शुरू होती है 1909 से और खत्म होती है 1960। जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि जब राजकुमार का जन्म होता है, राजकुमार से हमेशा ये कहा जाता है, उसके जितने गुलाम हैं, जितने चारों तरफ लोग हैं, उनसे कि राजकुमार जी आप कहिए, मैं गर्दन अभी काट के दे दूँ। विश्वास नहीं होता, कहता है कि तुम सच में ये विष का प्याला है, पी जाओगे? उनके दास कहते हैं हाँ बिल्कुल पिलाएंगे, क्या हमारे राजकुमार हैं, आप कहेंगे तो उनकी विष का प्याला जरूर पी। इतनी ज्यादा श्रद्धा वाला राजकुमार जब युवा होता है, तब जापानीज का हमला चाइना में होता है। विश्वास नहीं किया जा सकता उस राजकुमार के साथ कैसे कैसे व्यवहार जापानीज करते हैं, कैसे उससे टॉयलेट साफ कराते हैं वगैरह। कहानी का समापन होता है 1960 60 थोड़ा बाद होते हैं 50 में, जब चाइना आजाद होने शुरू होता है। उस समय जिस तरीके से चाइना, ठीक है, चाइना अपने को जिस तरीके की डेमोक्रेसी कहता है, तो उनका डेमोक्रेटिक शासन फॉरबिडन सिटी, चाइना के फॉरबिडन सिटी में जब स्थापित होता है, तब एक सामान्य बुढ़ा सा कमर झुकाए हुए व्यक्ति वहां घूमता रहता है, जिसको कोई नहीं पहचानता। ये वही राजकुमार
वही इच्छा शक्ति। सेना की शक्ति एक इतने महत्वपूर्ण जीवन में, राजकुमार के जीवन से एक समाजवादी अंत तक की कहानी के लिए बहुत कुछ कहती है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ आप सब विद्वानों के सामने, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ जिस तरीके के विद्वान यहाँ पढ़ा रहे हैं इतिहास के, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन मुझे इतना ही समझ में आता कि ये जो भी उद्बोधन होंगे, जो प्रदर्शन होगा, जो चर्निंग होगी विचारों की, उससे फाइनली जो मक्खन निकल के आने वाला है वो मक्खन भविष्य निर्धारण के लिए जरूरी। इतिहास के सारे पढ़ने का शायद यही एक कारण हुआ करता है, हम सब इसीलिए शायद पढ़ा करते हैं कि भविष्य की नीति निर्धारण और भविष्य को समझने के लिए ये इतिहास, ये सोच, ये जर्निंग हमारे काम आएगी। मैं बिल्कुल ज्यादा आपका समय नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत एक बार फिर आभार, धन्यवाद मुझे यहाँ याद करने के लिए। हमेशा मैं अपने इस घर में आता रहूंगा जब जब याद किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Your guidance has always been instrumental to help Mahila PG Mahavidyalaya soar ahead. And one of the ways that you have helped and guided us is through data science, a program that we have started recently. And to thank you, I would now request one of the students from data science and MCC to come forward and give a vote of thanks to sir. Chair everyone, I lend forward to Ananya Modi on behalf of the first ever batch of data science all over the Western Rajasthan. Would like to extend my utmost gratitude to Honorable Professor K.N. Srivastav sir, Vice Chancellor of Jayanarayan Vyas University, for giving us this opportunity of learning something new, something challenging. Data science, the highly demanding skill of the time, explains how data is transforming businesses and helping them make sharper and critical decisions. We believe that this diploma course will definitely yield sweet fruits in our coming future. Once again, thank you, sir. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Ananya. Atiti Devo Bhava has been the tradition at Mahila PG Mahavidyalaya. And keeping up with this tradition, we would now like to felicitate our distinguished Honorable Vice Chancellor, sir. To begin with this felicitation, I would request Shri Krishna Vyasji sir to kindly come up on stage and felicitate sir with a garland. I would request Professor K.N. Vyas sir to kindly come up on stage and give Professor Srivastav with a plant. Sir, this has been a tradition for Mahila PG Mahavidyalaya that we felicitate our members of the family and guests with plants because they are the greener alternative. Please give a big round of applause. I would now request Engineer K.C. Bohra sir to kindly come up on stage and felicitate sir with the memento. Thank you so much, sir. I would now request Professor Anil Vyas sir to kindly come up on stage and felicitate sir with the Saha. Please give a big round of applause. I would now request G.P. Vyas sir to kindly come up on stage and felicitate sir with a shawl.
I think everybody's had the breakfast, so please keep the applause going. I would now request Professor N.D. Purohit sir to kindly come up to the stage and felicitate sir with a Shrifal. So we know that you have been very busy and you took up time from your busy schedule. So we are very thankful to you for this. Sir has had a very busy schedule and he'll be leaving in a few minutes. Sir, we thank you enough. We will request everybody to rise up when Sir leaves. Thank you so much, sir. Please give a big round of applause as he leaves. Role of military in shaping history. Today's keynote speaker is a man of many talents, a true academician and a man of history. Professor Anirudh Deshpande, professor at Department of History, Delhi University, has authored several books including The British Raj and its Armed Forces, British Military Policy in India 1900 to 1945, Colonial Constraints and Declining Power, Class, Power and Consciousness in Indian Cinema and Television, The First Line of Defense, Glorious 50 Years of the Border Security Force, BSF, Hope and Despair, Mutiny, Rebellion and Death in India, Practice of History, Essays in Search of New Past. He has published several research papers in peer-reviewed journals and international encyclopedias since early 1990s. He is an associate editor of online journal and international institutions and Imperial Books London. His first novella, Five Lives, was published in 2018 under Solar Books. He regularly writes and publishes short stories in English and Hindi as well. Sir, we are more than honored to have your presence with us. Please give a big round of applause for Professor Deshpande as he delivers his keynote address. The distinguished people sitting on the stage, the principal of the college, and Chairman Sahib, who is not here, just I think gone out to see of the Vice Chancellor, who very kindly considered me fit enough to deliver this keynote address. And Professor Manoj, who has come from Bikaner, and of course the Honorable Vice Chancellor. First of all, I'd like to thank the management and the academics of the college for giving me this opportunity to deliver the keynote address for this two-day seminar on the role of military in the shaping of history in general. I also thank all of you who are here in the auditorium to listen to the few words which I have to say. Very interesting
very old subject. I'm also happy to note the fact that before my keynote address was delivered, our dear principal outlined all those aspects of history which can be connected to the military and its various institutions in order for us to understand the overall historical role of military and military history in the shaping of human history in general. I'm also thankful for the Vice Chancellor to have mentioned Bernardo Bertolucci's very famous film, The Last Emperor, which is actually a biopic of Hu Yi, who was the last Chinese emperor, and who was installed as the emperor of Manchuria by the puppet regime established by the Japanese there in 1931 called the Manchukuo. And cinema being one of my favorite topics, and I keep encouraging my students to look at all kinds of cinema. And when I finished my courses on fascism and National Socialism at the university, it is my habit to ask my students to end the courses with a day or 2 days of watching good cinema and war cinema in them. But that's a different topic, which I might leave for another day. So, when I was asked to come here and deliver the keynote address, my first instinct was to speak about military history in general. But then I stopped myself, because military history is a very vast subject. It is one of the oldest ways of doing history, since the times written history has been written, since the times of classical antiquity, or even before that, when writing was invented. One of the first forms in which history was written was the military history of kings, queens, emperors, and the state. So I stopped myself from delivering a very long lecture on military history in general, and I said, let me concentrate on a few questions which I'd like to ask of the subject outlined by the Honorable Principal before me, so that we can make these points some important points of the discussions which I have. I'm sure will be very interesting and we can follow today and tomorrow in this 2-day seminar. So the basic question with which I'd like to begin my keynote address is very simple. And that question is, what is the importance of military in history? Or if you flip the question by asking, what is the importance of military history to the overall subject and writing of history? And no point in going into the popularity of military history. It remains popular. It has been popular for a very long time. Its popularity remains undiminished over the last 200, 300, 400 years. In fact, I would say since the times when Edward Gibbon's classical work on the decline and fall of the Roman Empire was published in the 18th century as a tribute to his mentor, Voltaire, the father of the French Enlightenment. That looking at the rise and fall of empires, especially in military, administrative, and bureaucratic terms, was a fashionable way of doing history from the 18th century on. For the general population, general people, general readers, military history remains important. Although unfortunately, for academic historians, the importance of the military, especially in India, began to emerge. In fact, it began to gather steam and began to be considered as a viable subject only in the 1980s and 90s. And I was one of those young scholars at that time who did his first MPhil and PhD on subjects of Indian military history.
But even then, the going used to be tough because Indian history writers, Indian academic historians, professional historians were always more concerned with very important issues of history like economic history, labor history, social history. Even political history in the 80s and 90s had gone out of fashion as the cultural turn and the linguistic turn came to influence the writing of history, not only across the world, but also in India in the 1980s and 90s. So no point in going on and on about military history, which is a very popular discipline. But at the same time, it is important to remember that despite military history and the writing on military being very popular, there is no end to the misconceptions about the military and the military history which the popular mind entertains as a consequence of a lot of half-baked knowledge about the military and military history available in the market. We live in the times of weekend historians. We live in the times when software professionals, engineers and doctors turn historians during their sabbaticals and weekend breaks. And they write half-baked histories which are published by publishers who are more in search of profit than in the pursuit of true knowledge about what the military or military history can be. So let me begin by defining the military as distinct from what we normally call civil. From both words come the terms military society and civil society. And this is best illustrated by the difference between military Sparta and civilian Athens during the times of the classical antiquity with which we are familiar. I'm talking about ancient Greek history, where Sparta was considered the ideal military society and Athens was considered the ideal civil society. And the question here is not of necessity, but of the primacy being accorded to either military or the civil in matters of the state. All states require military. It's not as if Athens did not have a military. It was not as if the Athenians did not go to war. It was not as if the gods of war were not celebrated and venerated in Athens. But there was a crucial difference between Athens and Sparta. And this difference became very important as more and more people studied military history and history in general over the ages, and as aspirations of people either veered towards the military or towards the construction of civilian republics. So, the difference basically is that from military society, from the conceptualization of military society, comes the accent on force and coercion, whereas the accent on civilian society, civil society, comes the notions of debate, discussion, which became the foundations of what later on history began to be called by the general term democracy. And this difference between military dictatorships, between the fascist and the Nazi way of organizing and militarizing society, and the anti-fascist, anti-Nazi, anti-dictatorial way of organizing and running societies has been a very important long-term historical debate over the evolution of societies in the 1890s and the 20th century. So please keep these distinctions in mind when you carry on your debates about various topics about the military today and tomorrow. This brings me also to another point which I'd like to mention here, that military terms
have often been used by philosophers of civil society. And much confusion has resulted as a consequence of the use of military terms by philosophers who have worked in civil society. And one of the persons responsible for the creation of this confusion, although that was not his intention, is the Italian Marxist communist philosopher, General Secretary of the Italian Communist Party, Antonio Gramsci, who was one of the first ones to use military terms extensively in the development of his philosophy of praxis, his ideas of legitimacy and hegemony. And one of the favorite terms which he constantly uses for the working class and the peasantry is the word subaltern, which actually means a junior officer, in fact, an officer of the rank of second lieutenant in the army. So, the Gramscian notion of the difference between the civilian and the military can be traced back philosophically to the difference between Sparta and Athens in ancient Greece. So it is a recurrent theme in European philosophy, right from the ancient times, this clear-cut division between the civil and the military. This brings me to another point. From the period of classical antiquity, or even before that, from the times of the Nile Valley civilization, which is coterminous with the building of the pyramids and the temple of Abu Simbel, and the emergence of the state from the surplus generating Neolithic age, we find evidence of the military activities of the state. So we can say then history that in the overall development of human history and its evolution, the military and the state are not only co-equal, but they are also coterminous. It is with the birth of the state, it is with the evolution of the state, and it is with the constant attempt by the state to monopolize coercive authority in its own hands that the role of the military is defined in history. I don't think when humanity lived in the Paleolithic age, before the Neolithic age, before the notion of surplus emerged, and the gathering of the surplus in the hands of the ruling classes took place, and the most important question of protecting this surplus from competitors of the state came up. There was a military. Paleolithic communities occasionally fought with each other. They probably used stones and clubs and dandas and so on and so forth, but there were no military. The evidence of military, both epigraphic as well as pictorial, comes with the emergence of the state in history. And one of the best examples of this is to be found in the murals of the Abu Simbel temple, where entire walls depict military history in its glory, with the Ramesses riding the chariots and defeating the Hittites, marrying their women, and leading great masses of Egyptian armies against the Hittites who had invaded Nile, who had invaded the Nile area, who had invaded Egypt in the ancient period. This is more than, I think, it's around 2700, 3000 BC, I forget the date. It's very old. Similarly, we find evidence coming from various sites in the Middle East, and we have also this kind of evidence in the epigraphic evidence which we find, which is generated in the Indian subcontinent from the antiquity period onwards.
So once you establish the primary axis of understanding the emergence of military in history, and you consider the proposition favorably that the emergence of the military is co-eval and coterminous with the state, you go on to ask two other important questions. And these questions have to do something with the activity of the military. What is the main activity of the militaries in history? Why is the military necessary to the state? The usual answer you get is that the state requires the military to defend its territorial integrity against possible invaders, attackers, and so on from outside. That is only one aspect of the military. In fact, I would say that when you look at the period of classical antiquity and you bring that period right up to the modern times, I would say even during the times in which we find ourselves living, we have witnessed imperialistic wars unleashed in many parts of the world. And one great imperialistic war is being waged in Ukraine at the moment. There's hardly a year since 1945 when there has not been a major international conflict in which militaries of various powers have not been used. So although we don't have a world war, but we always have a world at war since 1945. So when sometimes people ask me, do you think there will be a third world war? I said, you keep living in the third world war. The shape of war has changed. Now you are racked by what are called LICs, low intensity conflicts, which go on all the time, fueling demand for sophisticated military hardware produced in the Western countries, who keep enriching themselves because nationalism, hyper-nationalism remains strong in many third world and poorer parts of the world. So on. So from the times when the military emerged as part of the state, a very important part of the executive apparatus of the state, I think my understanding of the military as it has evolved over the last 40 years or so leads me to conclude that the military has played two functions. One, control of the people by the state, and the making easy of the surplus extraction wherever possible. Number two, conquest, loot, plunder, and other powers to enrich the monarch and his state and increase his prestige among his subjects. And this is the hegemonic enterprise of the state, towards which all monarchs and all states have used their military. This happened before the nation state came into existence in the 19th century, and this has continued to happen since then. And when ma'am referred to the military in the colonial period, one of the functions, apart from protecting the northwestern borders of India from possible invasions from the northwest, which was entrusted to the standing Indian army during the British period, one very important function was assigned to the army, and that function was to come to the aid of civilian authority in case law and order broke down and the organized police forces of the Raj were incapable
of maintaining law and order. And that was a very strong possibility in India in the 1920s, the 20s, 30s, and 40s, with mass nationalism rising. And it had always been considered a very important possibility since the conflagration of 1857. Don't forget the Great Mutiny, the Great Revolt of 1857, in which militaries from both sides played a very important role. From the side of the rebels, as well as the new English armies which were raised to put down the Bengal army, which had in general mutinied in the majority. So we find in this hegemonic enterprise of the state to which the military is dovetailed, towards this end, we find that the gods of war were celebrated among all warlike people across the world, and warfare became an integral part of statecraft, as attested by the murals in Abu Simbel or the Chola inscriptions in Karnataka, which speak eloquently of the destruction of the Badami Chalukyas by the Chola armies which raided Karnataka, or the activities of the Chola armies in Sri Lanka and the destruction of that great town, Anuradhapura, by the Chola army of Rajaraja, and the plunder of its temples and the destruction of the Buddhist sites and the taking away of the loot and plunder and so on. There is also evidence to suggest, to corroborate what she just mentioned, that there was a practice of kidnapping and taking away hundreds of women from the areas which were captured by the army, and then keeping and sequestering these women in special colonies back home and using them to produce a race of warriors and soldiers by the Chola kings. So the military was used for a variety of things, and these are celebrated events in the literature of that time. Kings boasted of doing that. And we cannot forget the Homeric Iliad, which is a military epic. And who can forget the telling of our own epics, Mahabharata and Ramayana, to which warfare is central. Warfare is central to these, and even to the yajnas like the Ashwamedha Yajna, which is a military exercise, where the emperor let loose a horse. And it is a challenge to the neighbors and the Samants and the other kings to stop that horse. And anybody who has the guts to stop that horse must then fight the Samrat. And so on. And the horse is made to run through various territories. And whatever territory the horse runs through, the Samrat's army follows the horse and keeps conquering territory after territory, at the end of which the horse is sacrificed and various other things are. So war was always associated with masculinity and male aggression and the values of patriarchy which were present in all states. And it is often through military activity that these values became trans-historical values which all states and their militaries imbibed from the ancient times onward. So once the military and warfare in general became an integral part of the very existence and power of the state, all writers who became historians of the rulers and their state wrote accounts of, and often glorified accounts of, kings and emperors and so on, and their armies and their victories. And one of the best examples of such writing, and these writings became the main stock of history writing for a very, very long time, because history writing for a very long time was political history writing. And political history writing was about kings, about emperors, about their state, about their activities,
about their glory. And to this, the military was very, very important. It was central. Who would glorify an emperor who did not conquer? Who would write paeans to a king who did not have a strong army at the sight of which the neighbors would quake? So it's the great man theories of history. The political histories to which military history was always very, very central. Much later, that military history, much later, as I'll tell you, in the 18th and 19th century, that the military history as a subject began to evolve as a specialized subject. So we find one of the best examples of this is the historical accounts of Alexander, his exploits in Asia, in the Middle East, in Persia, in India, his exploits in Alexandria, in founding of the Alexandria in Egypt, and his seizure of Ptolemaic Egypt. And the man who wrote this was none other. Of course, there are. It's not only about Alexander and his armies. The accounts are very rich in other details as well. And the man who wrote this, we know as Herodotus, the father of historiography. So, but this was not an exclusive preserve of historians who roamed around with the Roman emperors like Caesar, or later or earlier, Hellenic emperors like Alexander and so on. But closer home, we have examples of military, political, state histories of Indian emperors also. And the most important document of this genre is Kalhand's Raj Tarangini, which is an account of the kings of Kashmir and their various activities. And in these activities, military activities are foremost and mentioned with a great amount of detail and so on and so forth. And these are basically the histories of the kings of Kashmir and their military exploits, which included raids, plundering raids, conquests, making of temples, destruction of temples, because the enemy's religious places were symbolic of his power. They had to be destroyed. Your own places had to be built to tell the people that a new emperor, a new king was ruling them, and that his symbols would become more important than the symbols of those who had been defeated and vanquished, and who therefore had no moral right to rule those people anymore. Similarly, when you progress in history, you have other genres of history writing in which details of military activities are mentioned. And what comes to my mind are the numerous Marathi language bakhars, some of which have detailed accounts of campaigns, weapons, tactics, battles, defeats, and even the causation of events. Some historians consider the bakhars a kind of historical writing. And there was a time when even people like Rajwade used to dismiss the bakhars basically as mythological readings of the past. But over time, historians have started taking a more nuanced view of these pre-colonial sources which we have at our disposal. But of course, as I keep telling my students, if you read bakhars like the Bhausaibanchi Bakhar on the Battle of Panipat, 1761, or if you read an account of that battle left behind by Kashiraj Pandit, who was the Vakil of Shujaud-Dola, who was present at that battle, or you read the Savasat Bakhar, from where we cull the most primary information about Shivaji, which was written in the 1790s at the request of somebody, and or if you 1690s, and or if you read the Ikyanve Kalmi Bakhar or other, there are hundreds of Bakhars which you can read. And this is the genre which looks at the military very, very carefully, where the economic dimension of the military is mentioned, where the problem of raising money is mentioned, where
the problem of financing the troops is mentioned, where the possibility of troops becoming rebellious in the event of not being paid cash regularly is also mentioned, because people don't only fight for an idea, people also fight for their stomachs. And if, as Napoleon used to say, an army cannot march on an empty stomach, so at the end of the day, troops have to be paid, the commissariat has to be paid, supplies have to be paid for. And for that, the moneylender comes in. Loans are important. All wars are finance wars. At the end of the day, who pulls the strings? Paisa chahiye. Economic history remains important. At the back of the military history, at the back of the military event, at the back of the, behind the battle, many decisions have been taken already which decide the outcome of the battle. Look at the Battle of Plassey, decided much before the battle actually took place. Look at the battles of Lashwadi, look at the battles of, Asai. When you study these battles very carefully, you come to the conclusion that the decisions of the battle have already been made. And the decisions have been made by the moneylenders who have lent the money to the East India Company, who are reposing greater confidence in the financial capability and strength of the East India Company. Whereas when you look at the records of the Shindes or the Holkars or the rulers of Baroda, or you look at the records of other Indian princes and kings of the 18th century, you find that they are keeping their troops in areas of pay for several months. So the troops don't have the motivation to fight so hard. The French officers are not interested in fighting the British. Mahadaji Shinde's troops, his western trained battalions, Daulat Rao Shinde's western trained battalions inflicted many defeats on the Rajputs, and the Rajputs were considered great warriors because these were French trained, modernized battalions led by Daulat Rao Shinde's generals, people like Bennett Dubois, who actually modernized the force. But when war was declared, when the Second Anglo-Maratha War started in 1803 seriously, the French officers decided that they would not fight for the Shinde against the British, because nobody wanted to leave India in a coffin. All their money was invested in the East India Company. I'm talking of the English East India Company. All the major ports of the country from where they thought of leaving India with their treasure and money and savings, they were in the hands of the British. So the war was already decided much before the actual battles took place. So sometimes when you talk of the military, you have to keep in mind the economy. You have to keep in mind the finance aspect of financing war. In fact, when you read a book like The Rise and Fall of the Great Powers by Paul Kennedy, which was written in the early 1990s, you come to the conclusion that military power ultimately is economic power, financial power. A state may become militarily very powerful. It may show that it is militarily very powerful, like Nazi Germany in the late 1930s. But it may not have the economic depth to carry on a long war. And that is why the Nazis ultimately were defeated in the Second World War. So it's American money which is coming in, it's American produce which is coming in, which is deciding the fortunes of the First World War, which also decide the fortunes of the Second World. Let me say a few other things before I conclude. I thought I was given about 45 minutes. Is that correct, sir? I have, do I have some time? Another 5-10 minutes? So I don't want this to become a Delhi University MA, MPhil 2-hour, 2.5-hour, 3-hour lecture. And people will get very bored because other people also have to speak in the seminar. That's one problem of calling a Delhi University professor. Delhi University professors usually warm up in an hour or so, and they have long classes. So, calling a Delhi University professor is like wielding a double-edged sword. The flip side, you have done.
They are like Indian politicians who say, मैं दो शब्द बोलूंगा और उसके बाद 3 घंटे चुप नहीं रहता. So one offshoot of the heightened importance of warfare, armies, navies, weapons, trained soldiers, leadership has been the continuous production of didactic and prescriptive texts by real and proclaimed experts of war and statecraft. I'm very happy when I entered this hall, this capable young lady who was introducing everybody was mentioning a person whose book I keep reading and I find very enlightening, like Ho Chi Minh found it enlightening once upon a time when they were fighting the Americans. And before that, even Chairman Mao found it very enlightening when he was fighting the Japanese and the Kuomintang together in the Chinese War of Liberation, which lasted 20-30 years in China in the 1920s, from 1919 onwards till 1949. And that man is Sun Tzu, The Art of War. So you have famous works like Sun Tzu's The Art of War. In India, you have, again, they have mentioned it, in India you have the Arthashastra, which is actually not a book of military expertise, but which mentions the military, the forts, and the importance of the forts and the military to the sovereign. Arthashastra is more about general statecraft. Or you have, in general, you can talk about the early 18th century Marathi text, Agnya Patra, which is loosely based on the Arthashastra, which speaks of the importance of forts, soldiers, navy, trade, moneylenders to the sovereign. And these didactic works start appearing from the ancient times onwards. But the flood of didactic writing on the military came in Europe during the 18th and 19th century, when several European states underwent a so-called military revolution, to use Geoffrey Parker's term, and European militaries, funded first by mercantile and later industrial capitalism, became the national instruments of colonial and imperial power, wielded by all European nation states since the 16th and 17th century. It's from that time onwards that you find that the military as a modern organization starts gaining its shape as we know it today. And the establishment of military academies in France, Switzerland, and Prussia during the 18th and the 19th centuries paved the way for the scientific study of war and the emergence of a philosophy of war, best exemplified in the work of Maria von Clausewitz on war, Vom Krieg in German. But before that, you have the work of Jomini, who was a great military philosopher. So then military study, the study of military and military history, is raised to the level of a philosophy. And Clausewitz is quoted. In fact, Clausewitz is quoted by many people who have never read Clausewitz. It's a delightful book if you ever get your hands on Clausewitz, Vom Krieg, in English, on war. It's a very big treatise. And not only was Clausewitz a young officer in the Prussian army, who was for a little while seconded to the Russian army during the Napoleonic campaign, which he studied very closely. Most of his on war, Vom Krieg, is based on his own experience as an officer and his study of battle, both from a distance and at close quarters. Very unfortunate that Clausewitz died very early in 1831 in that plague epidemic, which also claimed the lives
of people like Hegel. So in the 19th century, we find military studies, strategic studies, the study of military diplomacy, and the study of the military academy emerging as a very important field of study promoted by the modern European state. And at the back of this is the establishment of the military academies, the modern military academies, which were established across the world. And from there, they moved on to countries like Japan, where military academies, military thinking, and a lot of work on strategy and tactics played a very, very important role in the rise of Japan very quickly after the Meiji Restoration of 1868. So the Japanese military also came to pattern itself on the German military, and it was trained first by the French and later on by the German military experts. And you will have to locate Alfred Mahan's work, The Influence of Sea Power Upon History. It's a very important work. I think all military historians must read that work. It's available in the PDF format, which influenced German naval shipbuilding program, because Admiral Tirpitz himself was a great student of Alfred Mahan, and he began to pattern the German Navy on the guidelines of naval power laid down by Alfred Mahan's very important book, The Influence of Sea Power on World History. I think it's also a very instructive book, of course a little outdated, but worth reading. So by the 19th century and by the late 19th century and the early 20th century, we have a very big corpus of military related work, not only in terms of military history, but extremely didactic and prescriptive philosophical texts on the military having emerged across the world. And 20th century only added to this enormous corpus which had been evolved and developed from the 18th century onward. Now, I don't wish to take too much of your time on this very interesting subject, but I wish to conclude this address by saying the following. Once the scholar has arrived at the rather obvious conclusion that the military is essential to the state, and our understanding of history remains incomplete without an understanding of the state and its class and power basis, we must ask, what is the state and its function in a mode of production? Why does the state come into being? Why does the state exist? And what does the state continue to do? And what is the role which the military plays in the functioning of the state, overall functioning of the state? The military is an executive instrument, a coercive executive instrument of the state. It is deeply connected to the ideology, society, culture, and economy of a country or a civilization, and cannot be viewed in isolation from all this. At the same time, our viewpoint on the military or its role in shaping history, as this seminar intends to focus on in a day and a half which we have left, is only an aspect of our total and holistic understanding of the state, its evolution, and its future. So the military has to be studied in the paradigm which is known to new military historians, the new military history, as the state, society, and war paradigm. Thank you very much. We are truly a world at war. Thank you so much, sir, for this very edifying keynote address. Even as a student of biotechnology, my interest in the subject has peaked, and I feel I could gain a lot from studying history now.
I truly and firmly believe that the students and the delegates who will be participating in this churning of ideas in the next 2 days will benefit from your address and will try and work upon the questions and facts that were thrown in this address. Keeping up with the tradition of felicitation once again, I would now request Shri K.C. Vyasji sir to kindly come up on stage and felicitate Professor Anirudh Deshpande with a garland. K.C. Bhora sir to kindly come up on stage to felicitate Professor Anirudh Deshpande sir with a garland. Please give a big round of applause. I would request Professor K.N. Vyas sir to kindly come up on stage and felicitate sir with a plant. I would request our revered principal sir, Professor P.M. Joshi sir, to kindly come up on stage and felicitate sir with a memento. Sir has always been a guiding light for us. He has been our ex-principal and still has been guiding us with all the activities that have been associated with Mahila PG Mahavidyalaya. Please give him a big round of applause. I would now request Professor N.D. Prohit sir to kindly come up on stage and felicitate sir with a safa. So safa is a tradition for Marwar and it represents our respect towards our Atithi. So I hope you will enjoy the colors that represent this land of desert. Please give a big round of applause. I would now request Krishna Kumar sir to kindly come up on stage and felicitate sir with a Shrifal. Please give a big round of applause. Thank you so much, sir. Our chief guest for the day, Professor S.K. Bano from Bikaner University, needs no introduction. His humble personality and demeanor has always been a source of guidance and inspiration for all the students he has taught and all the colleagues he has been associated with. I would now request Professor Bano to kindly deliver his address. Namaskar. The role of military in shaping history. इस विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर मंच पर विराजमान आज के मुख्य वक्ता, देश के मूर्धन्य इतिहासकार और मिलिट्री हिस्ट्री के जाने माने हस्ताक्षर प्रोफेसर देशपांडे, इस सेमिनार की डायरेक्टर प्रोफेसर एस.पी. व्यास, प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर मनोरमा जी, इस सदन में उपस्थित बहुत ही प्रतिष्ठित देश के बड़े बड़े इतिहासकार जो मेरे समक्ष मौजूद हैं, प्रोफेसर बहुगुणा विराजमान हैं,
प्रोफेसर राव, प्रोफेसर सूरजभान सर, विनीता जी, प्रोफेसर पोखराज जी और भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं। इस मौके पर क्योंकि इस सत्र का समापन हो रहा है, इसलिए मैं अधिक नहीं बोलना चाहूंगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर देश पांडे ने आज जो अपना उद्बोधन दिया, उससे एक बात खुलकर सामने आ गई कि सेमिनार का जो विषय चयन किया गया वह अपने आप में बेमिसाल था, समानांतर श्रेष्ठ था, उत्कृष्ट था। प्रोफेसर देश पांडे ने रेखांकित किया और वो सच है, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, आप सब भी इत्तेफाक रखते होंगे कि इसका कैनवास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फलक है। मिलिट्री जो शब्द है, ये मिलिट्री शब्द केवल सामरिक, सैन्य या फौज या फौजी से ही ताल्लुक नहीं रखता, उसके इर्द गिर्द एक इतना बड़ा कैनवास है, इतना बड़ा फलक है जिसके इतने आयाम है कि हर आयाम अपने आप में शोध की अपेक्षा रखता है। प्रोफेसर देश पांडे ने बहुत चुनिंदा किंतु बड़े इंपॉर्टेंट आयामों को स्पर्श करने का प्रयास किया। मैं सोच रहा था कि वो कई घंटे बोलते रहे, इच्छा थी कि उनको सुनते रहे, परंतु समय की सीमा होती है, मर्यादा होती है। परंतु जिन आयामों का आपने स्पर्श किया उनमें से हर आयाम अपने आप में कई आयामों का मार्ग प्रशस्त करना। और जब प्रोफेसर देश पांडे बोल रहे थे, क्योंकि मैं मेडिवल हिस्ट्री का व्यक्ति हूँ और राजस्थान हिस्ट्री पर मेरा काम है, राजस्थान के सोर्स मटेरियल पर मेरा मुख्य काम है, तो मैं सोच रहा था कि राजस्थान आर्काइव में ऐसा कौन कौन सा रिकॉर्ड है जिस रिकॉर्ड के बेसिस पर मिलिट्री हिस्ट्री के किन डायमेंशन को डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि मेरी दृष्टि थी सामने बैठे हुए रिसर्च स्कॉलर्स पर कि वो स्कॉलर राजस्थान के कंटेक्स्ट में किन चीजों पर काम कर सकते। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, कुछ चीजें पॉइंट आउट में नोट डाउन कर रहा था, क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री पर बहुत चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में काम किया है। डॉक्टर राजेंद्र यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बहुत प्रामाणिक काम किया मारवाड़ पर, और शायद पब्लिश होने वाला है, प्रकाशित होकर सामने आने वाला है। परंतु उन नामों को उंगलियों पर गिना जा सकता है जिन लोगों ने इस पर काम किया, और खास तौर पर आर्काइवल रिकॉर्ड को बेस बनाकर जिन्होंने काम किया हो, ऐसे बहुत कम स्कॉलर हैं, बिल्ड स्कॉलर्स हैं, जबकि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं अंतर्निहित। मसलन अगर छुएं, स्पर्श करें, मैं केवल टॉपिक्स को ही आपको लिखित करना चाहूंगा जिस पर बेशुमार रिकॉर्ड है हमारे पास, ओरिजिनल आर्काइवल रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल सैन्य प्रकार, शाही पद और सैन्य भर्ती, वेतन और भत्ते, पारितोषिक और पदवियां, सैन्य भर्ती और चयन के तरीके, दागना और पहचान, सैन्य सेवा की विविध शाखाएं, साज सज्जा, शिस्त्राण, गृह बख्तर, आक्रामक अस्त्र शस्त्र, भारी और हल्का तोपखाना, पैदल, तीरंदाज, बंदूकची सेना, शुतुरखाना, घुड़सवार, हस्ती सेना, नौसेना, अनुशासन, कवायद, कसरत। मैं केवल शब्द स्पर्श कर रहा हूं, हर शब्द पर पीएचडी की जा सकती है और क्षेत्र विशेष, रियासत विशेष के कंटेक्ट में की जा सकती है। मारवाड़ पे की जा सकती है, बीकानेर पे की जा सकती है, कोटा पे की जा सकती है, मेवाड़ पे की जा सकती है। सैन्य व्यूह रचना और तत्संबंधी तैयारियां, सेना की रूटीन गतिविधियां, गुप्तचर, युद्ध संचालन और नेतृत्व, युद्ध की चालें, किले और किलेबंदी, घेरा डालना और चलाना, रसद और कुमुक की आपूर्ति, विदेशी आक्रमण और नई युद्ध तकनीकें, तुर्क और मुगल आक्रमणों के नवाचार, घुड़सवार सेना, बारूद का इस्तेमाल और उसके रिजल्ट। फिर बहुत सी चीजें जो आपने स्पर्श की थी प्रोफेसर देश पांडे ने, जैसे समाज शास्त्रीय पक्ष, इनका जो एक पूरा फील्ड है, एक पूरा इतना बड़ा फील्ड है, जो फील्ड में से किसी भी एक आयाम को लेकर के अगर हम चले तो हमारे पास बेशुमार रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड है आर्काइवल रिकॉर्ड जिसको अभी तक टच नहीं किया गया, स्पर्श नहीं किया गया। जरूरत है
तो इस बात की कि बड़ी ईमानदारी से और शिद्दत से काम करने वाले नए रिसर्च स्कॉलर आगे आए और काम करें। डॉक्टर राजेश यहाँ विराजमान है, ICHR के डायरेक्टर है, बहुत उत्साहित करते हैं नए स्कॉलर्स को, कई तरह की ग्रांट्स, कई तरह के अनुदान, कई तरह की स्कॉलरशिप, फेलोशिप दे करके। तो आप लोग आगे आइए, काम करिए, बहुत संभावना है, सृजनात्मकता को लेकर बहुत संभावना है, इस पर हमारे पास रिकॉर्ड है बहुत सारे। नए धातु प्रयोग जो हुए, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर है, कारखानों पर बहुत मटेरियल है, यातायात और संदेश वाहन को लेकर काम किया जा सकता है, तो रोजगार को लेकर काम किया जा सकता है, जो एम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है की वजह से, उससे मुतालिक बेशुमार पेशे आते हैं, बेशुमार व्यवसाय ऐसे हैं जो उसकी वजह से डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से आकार लेते दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से बहुत से लोगों का घर की रोजी रोटी चलती है। और निर्णायक युद्ध जो हुए हैं, एक एक निर्णायक युद्ध के कई डायमेंशन हो सकते हैं, जिन्होंने इतिहास को बदल डाला, क्या कारण रहे, क्या परिणाम निकले, कौन हारा, हारा तो क्यों हारा, बाढ़ की क्या परिणति हुई। खाली युद्ध होने तक की बात खत्म नहीं हो जाती। प्रोफेसर देशपांडे ने कहा था कि युद्ध से पहले भी बहुत बेशुमार चीजें पहले लड़ी जा चुकी होती और बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो युद्ध के बाद लड़ी जाती, यानी लड़ाई चलती रहती, युद्ध चलता रहता। तो कहने का आशय ये है कि मैंने जितने आयाम स्पर्श किए, ये ऐसे आयाम हैं जो अपने आप में बहुत, जिसे कहें कि ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आने की संभावनाएं दिखाती हैं कि अगर इन पर शोध किया जाए, अनुसंधान किया जाए, इन पर रिसर्च की जाए और नए स्कॉलर्स इस क्षेत्र में काम करने को अग्रसर हों, तो बहुत कुछ है हमारे पास। और जो हमारा स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान की हिस्ट्री है, वो तो मेरे देश भारतवर्ष की सबसे समृद्ध हिस्ट्री है। और जहां तक रिकॉर्ड का सवाल है, तो रिकॉर्ड के मामले में नेशनल आर्काइव के बाद सबसे ज्यादा जो समृद्ध आर्काइव है, आर्काइव रिकॉर्ड के भंडार है, हमारे छोटे छोटे भंडार भी अपने आप में इतने मूल्यवान है, इतने भरे पूरे हैं। मानसिक पुस्तक प्रकाश चले जाइए मेहरान का, प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान चले जाइए, आप राजस्थानी शोध संस्थान चौपासी चले जाइए, आप प्रताप शोध प्रतिष्ठान उदयपुर चले जाइए, एक एक संस्थान में इतनी बेशुमार आर्काइवल रिकॉर्ड है। और उस आर्काइवल रिकॉर्ड में से बहुत सा रिकॉर्ड ऐसा है जो मिलिट्री हिस्ट्री से ताल्लुक रखता है, परोक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, खाली प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष कहते ना। तो ये चार ने व्हाट इज हिस्ट्री में लिखा है कि इतिहास गूंगा होता है, उसे बुलवाता कौन है? इतिहासकार बुलवाता। इतिहासकार तथ्यों से बुलवाता, तथ्य को भी वो गूंगा मानते, तथ्य बोलता नहीं, इतिहासकार बुलवाता। तो हमारे पास ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको बुलवानी है, रिसर्चर्स को बुलवानी, शोधार्थियों को बुलवानी, उस पर काम करना। तो बहुत सी परोक्ष अपरोक्ष इंफॉर्मेशन थोड़ा निकल करके आएंगी, और इस दिशा में अगर हम कुछ काम कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस सेमिनार को एक बहुत अच्छी सफलता के रूप में इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। और आने वाले समय में जब कभी भी टीका टिप्पणियां मीमांसा होगी या समीक्षा होगी इस सेमिनार की, तो महिला महाविद्यालय को स्मरण किया जाएगा कि महिला महाविद्यालय हमेशा से ऐसे कीर्तिमान स्थापित करता रहा है कि कुछ नया, कुछ नवाचार, कुछ नया मार्ग प्रशस्त करना और उसमें नेतृत्व करना, ये सब चीजें यहाँ होती रही हैं और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। और इस परंपरा को हम आगे और समृद्ध बनाएंगे। और एस व्यास जैसे जो धुआंधार व्यक्तित्व हैं, व्यास जी जैसे धुआंधार व्यक्तित्व नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनके होते हुए मुझे इस बात की अपेक्षा है, इस बात की आशा है कि हम इस दिशा में और आगे अग्रसर होंगे और बहुत अच्छी सफलताएं और कीर्तिमान उपलब्धियां अर्जित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। निर्विवाद। Thank you so much, sir. Thank you for your kind as well as encouraging words as always. In the tradition of felicitation, once again, I would now request Sri Rajendra Prasad sir to kindly come up on stage and garland sir with, and felicitate sir with a garland. Please give a big round of applause.
I would request Shri G.P. Vyasji sir to kindly come up on stage and felicitate sir with a memento. I would now request Professor S.P. Vyas sir to kindly come up on stage and felicitate sir with a plant. I would now request S.L. Hirsch sir to kindly come up on stage and felicitate sir with a safa. Please give a big round of applause. Thank you so much, sir. I would now request Krishnakant sir to kindly come up on stage and felicitate sir with a Shrifal. सर आगे यस यस मुझे मालूम है डॉक्यूमेंट्री आएगी यार Thank you so much, sir. I would now request Dr. Manorma Upadhyay ma'am to deliver the vote of thanks. Thank you, Priyanka ma'am. Role of military in shaping history पर हमने प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे का बीज वक्तव्य और प्रोफेसर श्रीवास्तव सर और प्रोफेसर भनोट के विचारों को सुना। मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने समय निकालकर एक ऐसे विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जो अपने आप में कम रिसर्च एरिया है। पॉलिटिकल मिलिट्री हिस्ट्री पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन स्ट्रेटेजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल मिलिट्री हिस्ट्री पर अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। मैं इस हॉल में स्वागत करती हूं हमारी आदरणीय दीदी, आदरणीय सूर्यकांता जी व्यास साहब का, एमएलए सूरसागर। और दीदी आप रो आशीर्वाद हमेशा मानते हैं और यूं ही बढ़ान राग जो सा। मैं स्वागत करती हूं इग्नो के रीजनल डायरेक्टर आचार्य सर का जो हमारे बीच मौजूद हैं। और अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं जो आज इस उद्घाटन सत्र में पधारे, आपके प्रति कृतज्ञ हूं कि आपने उद्घाटन सत्र के लिए समय निकाला। विशेष धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे का कि आपने एक बेहतरीन स्कॉलरशिप से हमें मिलिट्री हिस्ट्री के उन एस्पेक्ट्स को बताया, परिचित करवाया जो हम जैसे नवीन शोधार्थियों के लिए एक उचित मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ प्रोफेसर के श्रीवास्तव के प्रति, ऑनरेबल वाइस चांसलर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जिन्होंने मीटिंग्स के उपरांत हमारे लिए समय निकाला। हालांकि वो जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन इतिहास पर उनकी पैनी धार आज परिलक्षित हो गई। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ प्रोफेसर एस के भनोट सर का कि सर आप सदैव अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं। ऑलरेडी हम ऑल्दो हम मैडम को मिस कर रहे हैं,
और आपसे निवेदन है कि अगली बार जब पधारे तो मैडम भी साथ में हो। तो उनको हम मिस कर रहे हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल गया है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ बाहर से पधारे उन सभी पार्टिसिपेंट्स का, प्रोफेसर्स का, स्कॉलर्स का, जो अब होने वाले डेलिब्रेशंस में अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो सेमिनार संभव ही नहीं है। आपकी भागीदारी ही इस सेमिनार को महत्वपूर्ण बनाती है। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जयनारायण शिक्षण संस्थान के अंतर्गत संचालित चारों महाविद्यालयों के प्राचार्य स्टाफ के प्रति कि आप यहाँ पर पधारे और उद्घाटन सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की। एनसीसी एनएसएस की छात्राओं, महिला पीजी महाविद्यालय के तमाम प्राध्यापक और कर्मचारी गण, विशेष धन्यवाद डॉक्टर संजय बोहरा, क्योंकि बोलना जितना महत्वपूर्ण है उतना बोलने का इक्विपमेंट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप कॉमर्स के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर हैं, लेकिन बहुत भली भांति जो है ये माइक सिस्टम संचालित करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। डॉक्टर अविनाश बोहरा बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन जो एलईडी चल रही है और जो ये पूरा प्रोग्राम है वो यूट्यूब पर लाइव हो रहा है, इसको कर रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ डॉक्टर प्रियंका व्यास, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोफेसर हैं, लेकिन जिस तरीके से मिलिट्री हिस्ट्री पर आपने मंच संचालन किया है उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। नैना मैम, डॉक्टर अनिल पुरोहित, तेजेंद्र वल्लभ, रविंद्र टेलर सर और महिला पीजी महाविद्यालय की एमए की छात्राएं, जिनके हार्ड वर्क से ये पॉसिबल हो पाया है, ये पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं, लक्षिता जाखड़ मैम। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे ऑफिस के और स्टाफ के उन कर्मचारियों को जो हमारे आदेश पर, हमारी निवेदन पर ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं, क्योंकि इन व्यवस्थाओं के बिना कोई आयोजन संभव नहीं है। हम पर्दे के आगे दिखलाई देते हैं, हम पपेटियर्स हो जाते हैं और हमारे द्वारा संचालित वे, जो मैं पपेट्स ही कहूंगी क्योंकि वो आदेश का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है कि आदेश का पालन एक मैकेनिकल प्रोसेस में नहीं होता, हृदय में उदारता और एक वार्मथ के साथ होता है, क्योंकि वो सब ये मानते हैं कि ये हमारा अपना कॉलेज है और ये सभी जो बाहर से पधारे हैं हमारे अपने परिवार के लोग हैं। तो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए वो कार्यरत हैं। तो सारे मेरे तमाम सफाई कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपके कारण ही इस आयोजन का सफल होना संभव होता है। वे सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र। अब मैं आप सभी से यही विराजमान रहने का निवेदन करूंगी, क्योंकि हम अगला कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रोफेसर आरपी व्यास मेमोरियल लेक्चर में मंचासी अतिथिगण प्रोफेसर अनिरुद्ध देश पांडे और प्रोफेसर भनोट से निवेदन करूंगी कि आप नीचे अपना स्थान ग्रहण करवाएं, जिससे हम अगले कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें और उस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगी। अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानेंगे। वैसे तो इंटरनेशनली रिनाउंड हिस्टोरियन, परिचय के मोहताज नहीं, हम सभी के आदरणीय चाचा जो हैं, उनकी स्मृति में प्रत्येक 25 जुलाई को एक व्याख्यान का आयोजन प्रोफेसर आरपी व्यास स्मृति संस्थान द्वारा किया जाता है, जिनके अध्यक्ष उनके सबसे बड़े सुपुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद जी व्यास हैं। चाचा या प्रोफेसर आरपी व्यास
का व्यक्तित्व एक इतिहासज्ञ के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन वे परिवार को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति और इस इंस्टीट्यूशन को परिवार की तरह मानने वाले व्यक्ति थे। और हमने यही सीखा है उनसे कि एक परिवार की तरह रहकर कार्य करें। और प्रत्येक वर्ष हमारा ये परिवार विस्तृत होता जाता है, क्योंकि नए स्कॉलर्स से जुड़ाव होता है, नए प्रोफेसर्स को हमें सुनने को मिलता है, और उनका ही आशीर्वाद है कि ये परिवार विस्तृत होता जा रहा है, चाहे वह इतिहासज्ञों की दृष्टि से हो, विद्यार्थियों की दृष्टि से हो, टीचर्स की दृष्टि से हो। और उन्हीं की प्रेरणा से हम प्रत्येक वर्ष, उन्हीं के आशीर्वाद से हम प्रत्येक वर्ष एक स्पेशल लेक्चर का आयोजन करते हैं। प्रोफेसर आरपी व्यास स्मृति व्याख्यान, ये सीरीज में 9वां व्याख्यान है, और आज आदरणीय प्रोफेसर आरपी व्यास जी की पुण्यतिथि है, इसीलिए उनकी स्मृति में इसका आयोजन किया गया है। मैं प्रोफेसर आरपी व्यास स्मृति व्याख्यान के लिए अब डॉक्टर प्रज्ञा प्रियदर्शी हर्ष को माइक हैंड ओवर करती हूँ। आप सभी का आभार। Good afternoon, everyone. I'm feeling extremely honored today to be standing in front of you all and welcoming everyone on this esteemed occasion of 9th series of Professor R.P. Vyas Memorial Lecture organized by Professor R.P. Vyas Smriti Sansthan. Socrates, the Greek philosopher, he said, all men's souls are immortal, but the souls of righteous are immortal and divine. सभी मनुष्यों की आत्माएं अमर होती हैं, लेकिन पवित्र और न्यायपरायण मनुष्य की आत्मा अमर तथा दिव्य है. Today's lecture series is another milestone to commemorate this line only of Greek philosopher. I would like to invite our presiding chair person, Shri Rajendra Prasad Vyas. I welcome Srimati Suryakanta Vyas ji and our keynote professor, Professor V.S. Sunavale, to this esteemed occasion. I would request our dignitaries to please light the lamp and garland the picture of R.P. Vyas sir. मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के लिए आगे आएं. I would like to request all our dignitaries to please pay their attention on some reels of memories of work, achievements, and life principles of our beloved and renowned
प्रोफेसर आर.पी. व्यास सर। चाचा की स्मृति में उनके किए गए कार्य और उनके द्वारा प्राप्त अचीवमेंट्स को हमने कुछ मेमोरीज के थ्रू हमने एक पिक्चर प्रेजेंटेशन में उनको लिया है। आप सबसे अनुरोध है कि आप प्लीज थोड़ी देर मंच पर आसीन रहें और इन मेमोरीज को एक बार वापस याद करें। थैंक यू सो मच।
Thank you very much. I would now. Okay, there is one more reel. Sorry for that. Let's have a look into it also. सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य मृत्युर्हरि। कर्म योगी प्रोफेसर आर पी व्यास जी की लोक यात्रा। हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नमस्कार। कभी आपने विचार किया है कि बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, रहीम, कन्फ्यूशियस, गांधी या विवेकानंद जैसे संत, महात्मा और महापुरुषों में ऐसा क्या था जो उनके जाने के वर्षों बाद भी दुनिया उनके बताए रास्तों पर चलती है? न उनके पास कोई अपार धन संपत्ति थी, न सेनाएं थी, न लंबे चौड़े राज्य थे, न भय, न आतंक। फिर ऐसा क्या था जिसके दम पर ये सभी व्यक्तित्व आज भी हम पर राज कर रहे हैं? इन तमाम साधारण व्यक्तियों के पीछे असाधारण शब्दों की ताकत थी। इनके पास विचारों की सेनाएं, शब्दों के सैनिक थे, और इन्हीं अनमोल शब्दों की बदौलत इन महापुरुषों ने दुनिया को जीता। उन्हीं में शामिल हैं हमारे मारवाड़ के जाए जन्मे इतिहास पुरुष प्रोफेसर राम प्रसाद जी व्यास। किसी विशाल वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर जब हम विस्मय विमुग्ध हो उसके विस्तृत आयतन की ओर देखते हैं, तब क्या हम सोच भी पाते हैं कि ये विराट वृक्ष कभी एक सरसों के दाने जैसे छोटे से बीज के भीतर छुपा हुआ था, लेकिन पूतरा पग पालने में दीसे। विख्यात इतिहासकार, ईमानदार, कर्मठ, अनुशासित और वक्त के सख्त पाबंद डॉक्टर राम प्रसाद जी व्यास की जिंदगी जर्रे से आफताब बनने और प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित है। 12 अगस्त सन 1922 के दिन नखावतों की बारी नवचौकिया मोहल्ले में मारवाड़ राज्य के परम यशस्वी दानवीर राजव्यास श्री नाथो जी के वंश में श्री आई दास जी व्यास और श्रीमती इंदर कौर जी व्यास के सबसे छोटे 5वें पुत्र के रूप में जो शिशु जन्मा, उसे माता पिता ने अपने इष्ट भगवान श्री राम का प्रसाद मान नामकरण किया, राम प्रसाद। क्योंकि आपके पिता श्री आई दास जी रेलवे में टीआई थे, अतः आपकी प्रारंभिक शिक्षा सुजानगढ़ और रतनगढ़ में हुई। रतनगढ़ की एसआर हाई स्कूल से आपने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। जसवंत कॉलेज जोधपुर से बीए, एमए और एलएलबी की डिग्रियां हासिल की। इसके बाद एसएमके कॉलेज जोधपुर, डीडवाड़ा और सरदार शहर राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। 1962 ईस्वी में जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। आपने ख्याति प्राप्त इतिहासविद डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना के निर्देशन में रोल ऑफ नोबिलिटी इन मारवाड़ 1800 से 1873 ईस्वी इस विषय पर शोध प्रबंध लिखा। जोधपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आप प्रथम पीएचडी रहे। आपका शोध प्रबंध
जोधपुर विश्वविद्यालय के अनुदान से प्रकाशित। ये शोध ग्रंथ अपने ढंग का प्रथम ग्रंथ है। 1970 ईस्वी में आप जोधपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में रीडर पद पर चयनित हुए। आप 1982 ईस्वी में इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के उपरांत आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के इतिहास विभाग के फेलो प्रोफेसर के रूप में संबद्ध रहे। डॉक्टर राम प्रसाद जी व्यास के सैकड़ों शोध पत्रों का प्रकाशन राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में हुआ है। अधिकांश से आपने शोध पत्र प्रदेश के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर लिखे। आपके इस लेखन कार्य से प्रदेश के इतिहास लेखन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। आपके उच्च स्तरीय ग्रंथ महाराणा राज सिंह और आधुनिक राजस्थान का वृहद इतिहास 2 खंडों में प्रकाशित हुए। इंदुर राज सिंघी नामक पुस्तक राजस्थानी भाषा में लिखी, जिसका प्रकाशन महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र मेहरानगढ़ जोधपुर द्वारा किया गया। डॉक्टर राम प्रसाद जी व्यास ने गिरदी गौरव नामक काव्य ग्रंथ में सुमेर गिरदी के युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अत्यंत भावपूर्ण प्रकाश डाला है। आपने पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ का संपादन किया है। आपने लोकनायक जय नारायण व्यास नामक ग्रंथ की भी रचना की। इनके अतिरिक्त आपने राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में इतिहास प्रदीप, भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, विश्व का इतिहास और भारतीय इतिहास की रूपरेखा नामक पुस्तकों का प्रणयन भी किया। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में आपने अनेक बायोग्राफिकल एंट्रीज लिखी हैं। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का इतिहास विषय का अध्याय आपके द्वारा लिखा गया है। राजस्थान गजेटियर में प्राचीन राजस्थान के इतिहास शोध पर आपका आलेख है। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासी से प्रकाशित परंपरा अंक 85 और 86 आपके द्वारा समाज रत्न हरविलास शारदा के व्यक्तित्व पर प्रकाशित हुआ। डॉक्टर राम प्रसाद जी व्यास राजस्थान इतिहास कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। आपने संस्था के उपसचिव और सचिव पदों पर प्रथम 9 वर्षों तक कार्य कर इसे स्थायित्व प्रदान कर इतिहास जगत में प्रतिष्ठित कर दिया था। सन 1984 में बीकानेर में संपन्न राजस्थान इतिहास कांग्रेस के 13वें अधिवेशन में आपने इसकी अध्यक्षता की। राजस्थान इतिहास कांग्रेस के आधे से भी ज्यादा प्रोसीडिंग्स का आपने संपादन किया। आपने राष्ट्रीय स्तर के इतिहास संबंधी अनेक सम्मेलनों में जोधपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत कर प्रदेश के इतिहास और संस्कृति को उजागर किया। जोधपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने राष्ट्रीय स्तर के अनेक सेमिनारों का आयोजन किया। आप अखिल भारतीय इतिहास कांग्रेस के सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज कोलकाता के कई वर्षों तक कार्यकारिणी के सदस्य रहे। डॉक्टर व्यास राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, बोर्ड ऑफ स्टडीज इन हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कमिटी ऑफ कोर्स इन हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर इत्यादि के भी सदस्य रहे। चौपासी शोध संस्थान से प्रकाशित परंपरा नामक शोध पत्रिका के परामर्श मंडल के सदस्य के रूप में 1 दशक से भी ज्यादा समय तक आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी। विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति होने के पश्चात आपने पश्चिमी राजस्थान में 19वीं सदी में व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापारिक मार्ग विषय पर खूब कार्य किया। इस विषय पर शोध पत्र समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। अगस्त 1983 में इतिहास विषय के शोध कार्य में उत्कृष्ट और अनुपम सेवाएं अर्पित करने के उपलक्ष्य में आपको वीर दुर्गादास राठौड़ स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया।
अप्रैल 1986 में भारतीय परिवेश में संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्रों में जन चेतनार्थ इनकी स्थायी मूल्य की सेवाओं के उपलक्ष्य में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर की जानिब से महाराणा कुंभा खिताब से आपको नवाजा गया। जनवरी 1994 में राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के विद्वान, उच्च कोटि के शिक्षक, लेखक और समर्पित समाजसेवी के रूप में जगदीश सिंह गहलोत सम्मान से आपको विभूषित किया गया। मरुभूमि शोध संस्थान श्री डूंगरगढ़ चूरू की प्रबंध समिति ने श्री राम प्रसाद जी व्यास को उनकी इतिहास एवं शोध को समर्पित विशिष्ट सेवाओं के प्रति अपना आदर प्रकट करते हुए 7 अगस्त सन 1994 को संस्थान की सर्वोच्च उपाधि इतिहास श्री से आपको अलंकृत किया गया। महाराणा प्रताप पर उत्कृष्ट लेखन के लिए आपको प्रताप साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा आप सम्मानित हुए। आपकी अनेक पुस्तकें अकादमी द्वारा प्रकाशित की गईं। पूर्व मारवाड़ रियासत के हिज हाइनेस महाराजा जज सिंह जी साहिब द्वारा आपको राजस्थान संस्कृति एवं इतिहास लेखन के क्षेत्र में योगदान हेतु पालकी सिरोपाव कुर्ब से नवाजा गया। साथ ही 12 मई सन 2011 के रोज मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की मेजबानी में आयोजित जोधपुर स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में आप मारवाड़ रत्न अवार्ड से विभूषित किए गए। यह आपके कार्यों का ही फल था। न केवल स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज साहब के हाथ आपको सम्मानित किया गया, बल्कि जोधपुर की जनता ने 12 अगस्त सन 1998 को नागरिक अभिनंदन द्वारा आपको पलकों पर बिठाया गया। नई दिल्ली तक आपकी ख्याति भारत ज्योति अवार्ड द्वारा प्रकाशित हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सुवास है। कहा भी तो गया है कि रखना है तो रख लीजिए, रखना है तो रख लीजिए फूलों को निगाहों में, खुशबू तो मुसाफिर है, हो जाती है राहों में। डॉक्टर राम प्रसाद जी व्यास को इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज CB2 3GP इंग्लैंड द्वारा इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर फॉर 1997-98 का बहुमान दिया गया। इतिहास लेखन कार्य के साथ साथ आपने पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित और अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के मानद सचिव का कार्य भी बखूबी किया। आपके कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में शिक्षण संस्थाएं पुनः प्रगति की ओर अग्रसर हुई। आप जय नारायण व्यास शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महिला महाविद्यालय के संस्थापक सदस्य रहे। इस शिक्षण संस्थान के उन्नयन में आपका बड़ा योगदान रहा है। इस महाविद्यालय ने बहुत कम अवधि में राज्य स्तरीय ख्याति अर्जित की है। डॉक्टर राम प्रसाद जी व्यास ने स्कूल और कॉलेज के अपने काल में अध्ययनशील होने के साथ साथ खेलकूद में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की थी। बीकानेर राज्य में अपनी स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए हाई जंप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जसवंत कॉलेज की वॉलीबॉल टीम के लगातार 3 वर्षों तक आप कप्तान रहे और राजस्थान के इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में अपनी टीम को विजय दिलाकर फतेह का परचम लहराया। आप जोधपुर टीम के भी कप्तान रहे। यह टीम राजपुताना ओलंपिक में विजयी रही। सन 1942 में ऑल इंडिया ओलंपिक टूर्नामेंट में भाग लेने वाली राजपुताना टीम के आप खिलाड़ी रहे। 1945 में आपको राजपुताना वॉलीबॉल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। जोधपुर विश्वविद्यालय में अपने सेवाकाल के दौरान आप स्पोर्ट्स बोर्ड में भी अपनी सेवाएं देते रहे। आप जोधपुर विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम के कई वर्षों तक चेयरमैन रहे। सन 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल के स्थानीय सचिव रहे। आपके कुशल प्रशिक्षण, नेतृत्व और निर्देशन में जोधपुर विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए।
जोधपुर विश्वविद्यालय में सेवारत रहते आप टेनिस के भी खिलाड़ी रहे। आप नित्य एसएनके टेनिस कोर्ट पर खेलने हेतु जाया करते। आप जोधपुर जिला वॉलीबॉल संघ के लंबे समय तक सचिव और अध्यक्ष रहे। आपके सचिव काल में जोधपुर जिला वॉलीबॉल टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। जोधपुर विश्वविद्यालय के अपने सेवा काल में आपने चीफ प्रोक्टर, चीफ वार्डन, छात्र संघ के प्रमुख परामर्शदाता, एनसीसी ऑफिसर इत्यादि के रूप में बहुविध सेवाएं दी थी। डॉक्टर राम प्रसाद जी व्यास अनेक स्थानीय सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इन संस्थाओं में श्री अनाम ज्योति ट्रस्ट, श्यामदास जी आश्रम चांदपुर, श्री राम बोहरा एजुकेशन ट्रस्ट मुंबई, श्री रुक्मणी सेवा संस्थान चांदपुर, श्री नथावत व्यास अचल संपत्ति ट्रस्ट नवचौकिया इत्यादि नाम प्रथम पंक्ति में गिनवाए जा सकते हैं। वस्तुतः डॉक्टर राम प्रसाद जी व्यास के व्यक्तित्व में शिक्षा, साहित्य, इतिहास बोध, समाज सेवा और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय मिलता है। किसी कालखंड विशेष में घटित घटनाक्रमों का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन विश्लेषण की संज्ञा यदि इतिहास है तो प्रोफेसर आर.पी. व्यास को इतिहास पुरुष कहा जा सकता है। आपका समूचा जीवन मारवाड़ और पुष्करना समाज की गौरवशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा की ही एक कड़ी प्रमाणित होता है। ऐसा कहते हैं ना कि राजा भले ही अपने राज्य में पूजा जाए, लेकिन विद्वान हर जगह, हर काल में पूजनीय हो जाता है। That was a very brief sketch of such a vast life, which we can see we have to right now. I would like to now request Sri Rajendra Prasad Vyas sir, the presiding chairperson, to please come up on the stage. Sri R.P. Vyas sir, to please come up on stage and have a seat. I would request Srimati Suryakanta Vyas, GG, our chief guest for the lecture, to please come up on the stage and have a seat. Now I would like to request our dignitary keynote speaker, sir, Professor V.H. Sonavane, sir, to please come up on the stage. Dr. Rajesh Kumar, sir, Director, Journal Publication and Library. I would request you to please come up on the stage. Professor Dr. S.P. Vyas, sir, Chairman, Jayanand Vyas Shikshan Sansthan and Mahila PG College. I would request you, sir, to please come up on stage and have a seat. I would request Dr. Manorama Upadhyay ma'am to please come up on stage. I would request Dr. Manorama Upadhyay ma'am to please come up and deliver a welcome speech for the gathering. थैंक यू प्रज्ञा मैम। मैं प्रोफेसर आर.पी. व्यास स्मृति व्याख्यान नवी कड़ी की व्याख्यान माला में आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास साहिबा जी, जो जिनका प्यार का नाम है और लोक विख्यात नाम है
उनका स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आपने समय निकाला और जो हमने तस्वीरों में देखा था, चाचा के साथ आपका लंबा जुड़ाव रहा है दीदी, और हमेशा आप इस महाविद्यालय में पधारते रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर वी.एस. सोनानवे सर का, जिन्होंने प्रोफेसर आरती व्यास स्मृति व्याख्यान नवी कड़ी की व्याख्यान माला देने की स्वीकृति प्रदान की, और अपर पेलियोलिथिक पर आपका व्याख्यान रहेगा। विविध विषयों पर अभी तक व्याख्यान होते रहे हैं, ये पहली बार है कि आर्कियोलॉजी पर एक अपने प्रकार का व्याख्यान होगा। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर राजेश कुमार का, जिनका हम यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं। प्रोफेसर आरती व्यास स्मृति संस्थान द्वारा एक इतिहासज्ञ का सम्मान किया जाता है, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालांकि आपका ICHR का बहुत लंबा चौड़ा कार्य है और आप भागदौड़ में ही आए हैं, लेकिन आपने समय निकाला, इसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी व्यास साहब का, कि आपने ये व्याख्यान माला आयोजित करने की आरती व्यास स्मृति संस्थान को अनुमति प्रदान की। जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर S.C. व्यास जी, सामने विराजमान तमाम मैनेजमेंट सदस्य, बाहर से पधारे हुए प्रोफेसर, स्कॉलर्स, आरती व्यास जी के मित्रगण, टीचर, स्टूडेंट्स। समय सीमा को देखते हुए मैं सबसे पहले आप सभी से अनुमति चाहूंगी डॉक्टर राजेश कुमार के सम्मान की। हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित कर स्वयं सम्मानित होने जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर ICHR में न केवल स्थान बनाया, आप डायरेक्टर जर्नल एंड पब्लिकेशन के पद पर आसीन है वर्तमान में, लेकिन इनका जो शोध क्षेत्र रहा है वो सोशल हिस्ट्री, विशेष करके हरियाणा राजस्थान के इलाके की। आपने बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो प्रस्तुत किए हैं। साथ में आपने जो डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स है उसको संपादित करने में अहम भूमिका निभाई है। 1400 से अधिक जो शहीद हैं, कल जिनके बारे में ऊपर चर्चा चल रही थी, उसकी डिक्शनरी को आपने संपादित किया है। बड़ा श्रम साध्य कार्य है। और साथ में अभी अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों पर हिंदुस्तान भर की विराट जो पर्सनालिटीज हैं उन पर एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। तो उस एग्जीबिशन में जो कुछ भी जानकारी, चित्र या स्रोत प्रस्तुत किए गए हैं, ये आप ही की मेहनत का परिणाम है। हम सभी बहुत खुशनसीब हैं कि आज हम आपको सम्मानित करने जा रहे हैं। और एक और निवेदन मैं करूं कि अभी जो राजस्थान इतिहास कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था, उसमें प्रोफेसर आरती व्यास स्मृति व्याख्यान डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा ही दिया गया था। और उस जमाने में जो महामारी थी, उस महामारी जो प्लेग की, चेचक की जो महामारियां फैलती थी, उसके क्या सोशल इम्प्लीकेशंस होते थे, और तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार है या स्थानीय सरकारें हैं उनके द्वारा उनसे निपटने के लिए क्या कार्य किया जाता था, उस पर आपका व्याख्यान जो है वह आधारित था। आप एक अच्छे क्रिटिक हैं और मूल स्रोतों पर, अध्ययन पर ही बल देते हैं। जब कभी भी हम आपस में थोड़ी चर्चा करते हैं तो मुझे यही सीखने को मिलता है कि न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में जो जमाने में निकला करती थी, इतनी सामग्री है कि मैम आप देखिए बहुत सारी आश्चर्य करने वाली वस्तुएं हमें मिलेंगी। तो सोर्स मटेरियल ओरिजिनल पर इनका बहुत बल रहता है। मैं बहुत एहतराम के साथ डॉक्टर राजेश कुमार को आमंत्रित करूंगी कि आप यहाँ गलीचे पर पधारें और हमें आपका सम्मान करने का अवसर प्रदान करावें। डॉक्टर राजेश कुमार, निदेशक
जर्नल पब्लिकेशन एंड लाइब्रेरी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर कि आप मंच पर पधारें और साथ ही आवाज दूंगी राजेश जी के अनुज और अभिन्न मित्र डॉक्टर पर पधारे। राजेश जी का माल्यार्पण करावें। ये जितने सदस्य हैं ये आरती व्यास स्मृति संस्थान के सदस्य हैं, जैसे तेजेंद्र जी इसके ट्रेजरर हैं, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष, मुझे सचिव होने का सौभाग्य प्राप्त है, ज्योत्सना, अनिल, ये सब हम सभी सदस्य हैं और सदस्यों के रूप में ही कार्य करते हैं। मैं आवाज दूंगी अतुल व्यास जी को, अगर आप हॉल में मौजूद हैं। अतुल जी, अखिल व्यास जी, अखिल जी आप मंच पर पधारें। ये भी इस समिति के सदस्य हैं और प्रोफेसर आरती व्यास जी के पौत्र हैं। आपसे निवेदन कि आप माला पहनाएं इनको। निवेदन डॉक्टर ज्योत्सना व्यास से कि आप पधारें और राजेश जी का माल्यार्पण करावें। मैं निवेदन करूंगी जीपी व्यास जी से कि आप पधारें और पौधा भेंट करावे राजेश जी को। ये गो ग्रीन की हमारी परंपरा है कि आप पौधे को साथ ले जाएंगे, उसके उस विकास में आपके विकास की खुशबू समाहित रहेगी। निवेदन करूंगी एक बार पुनः जीपी व्यास जी से कि आप राजेश जी को स्मृति चिन्ह, प्रोफेसर आरपी व्यास स्मृति चिन्ह जो है भेंट करावें। ये सिंबॉलिक है उनकी यादों का, आप जब भी देखेंगे चाचा की आपको याद आती रहेगी। मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर एसपी व्यास जी से कि आप प्रोफेसर आरपी व्यास स्मृति स्वर्ण पदक राजेश जी को भेंट करावें। और राजेंद्र प्रसाद जी को भी अनुरोध करूंगी कि आप स्वर्ण पदक पहनावें। सर पता करूं? हाँ मैं आऊं सर? आऊं। साथ ही निवेदन करूंगी राजेंद्र प्रसाद जी से कि आप राजेश कुमार जी को साफा पहनावें। इसमें कलंगी लगी हुई है जो सिरमौर बनाती है सर आपको। बहुत जच रहे हैं, ये कहने का अधिकार मैं रखती हूं और मेरा सौभाग्य कि आपको मैं उत्तरीय उड़ाऊं शॉल के रूप में। यह विद्वानों का सम्मान होता है।
मैं नैना मैम से अनुरोध करूंगी कि आप राजेश जी को श्रीफल भेंट करा। श्रीफल बहुत सारी खूबियों को समेटे हुए होता है, इसीलिए इसे श्रीफल कहा गया है। भगवान का फल है ये इमरजेंसी में आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊपर से कठोर, अंदर से नीत से युक्त। तो एक विद्वान का यही परिचय होता है कि ऊपर से बड़ा वो सीरियस दिखलाई पड़ता है, लेकिन अंदर से ज्ञान विद्वत्ता जो है वो उसमें कूट कूट कर गिरी की भांति भरी हुई होती है, और साथ में अंदर जल होता है जो उसके उदार होने का प्रतीक है विचारों से। आपका बहुत बहुत आभार राजेश सर। आपकी फ्लाइट है, इसलिए सम्मान कार्यक्रम हमने पहले किया। आप यहाँ पधारे और हमें समय दिया और एक हमें सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया कि हम आपका सम्मान कर सकें। इसके लिए हम सभी प्रोफेसर आरपी व्यास स्मृति संस्थान और महिला पीजी महाविद्यालय के तमाम सदस्य आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आपका आभार। आगे का कार्यक्रम के लिए मैं प्रज्ञा मैम को माइक हैंड ओवर करती हूँ। Thank you so much, sir, for your enlightened presence with all of us. Now I would like to request our keynote speaker, sir, with a very brief introduction, which was very tough for me to make it a brief introduction note. Professor V.H. Sonavane, sir, Dr. Vishwarao H. Sonavane. He pursued his higher studies in Indian history, culture, and archaeology at Maharaja Sayajirao University of Baroda, and he retired in 2008 as Professor Director of Field Archaeology. During his academic tenure of 50 years, a half century, he worked upon various aspects of prehistoric, protohistoric, and historic archaeology besides the rock art. Along with the head of department post, he was also coordinator of UGC SAP Phase 1. He is associated with various important premier academic governance bodies like General Secretary of Society of South Asian Archaeology, member of Standing Committee by Central Advisory Board of Archaeology of Archaeological Survey of India, member of World Heritage Committee appointed by Central Government to monitor ongoing excavations at Vadnagar, member of Advisory Committee for Adi Drishya Department of Indira Gandhi National Center for Arts, New Delhi, Vice Chairman of Indian Archaeological Society. He is representative on Management Council of Deccan College, Pune, nominated by UGC New Delhi, convener of UGC 11th Plan Visiting Team for Deccan College, Pune, member of Advisory and Monitoring Committee for Marine Archaeology Center of National Institute of Oceanography, Goa, and many more committees. I just got this now. He had been traveled to many countries like Australia, France, Italy, Malaysia, and New Zealand for various academic purposes. He has participated in more than 100 national and presented in more than 100 national and international seminars and conferences. He has more than 100 papers published in various national and international journals. His extensive knowledge for PhD in archaeology. He received many awards like Hari Om Ashram Award for paper publication, Vijay Ratna Award for Indian Archaeology, Dr. V.S. Wakankar Award by Indian Archaeological Society, R.C. Parekh Gold Medal for Lifetime Achievement by Gujarat,
Dr. Vishwa Sridhar National Award by Department of Archaeology, Archives and Museum by Government of Madhya Pradesh. I would request such an esteemed personality to please enlighten us with a lecture series on symbolism of the design engraved on Upper Paleolithic core found at Chandravati district, Sirohi, Rajasthan. I request you all to please welcome sir with a great round of applause. Thank you. लैपटॉप यहाँ से नहीं होता है ना सब्सक्राइब होता है हाँ हाँ ठीक है ओके good afternoon. I am extremely thankful for the organizers of the 7th memorial lecture of Professor R.P. Vyas and for inviting me to give this 9th lecture. Now I am extremely happy to be here on this August gathering. As I said, I am going to talk about, this is going to be a slightly different lecture than the earlier lectures given by the scholars, mostly confined to early historic period or medieval period or even modern period. Since my specialization is in prehistoric and protohistoric culture, and I thought this particular topic would be interesting so far Dr. R.P. Vyas memorial lecture will be concerned. Okay. I am grateful to the authorities of Professor R.P. Vyas Smriti Sansthan, Jodhpur, for inviting me to deliver the 9th Professor R.P. Vyas Memorial Lecture under the aegis of its one of the prestigious annual lecture series instituted in the Professor R.P. Vyas Smriti Sansthan. I feel truly honored to be here among the august gathering of learned scholars. I attach special importance to this occasion because this year's lecture forms part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. As you are all aware that Professor R.P. Vyas Memorial Lecture has been delivered regularly since 1914 by 8 renowned scholars. I am not going to give the names of all this, but everybody was contributed their own field and known as a great scholars of academic interest. I still wonder why my name was chosen when there are scholars more qualified to deserve this honor. I have a tall order to follow because my forerunners and would like to take this opportunity to speak on symbolism of the design engraved on the upper Paleolithic core found at Chandravati, district Sirohi in Rajasthan. For today's talk, I have deliberately selected the topic related to Professor R.P. Vyas' multi
multifaceted interest and valuable contribution to Indian culture. It will be a befitting tribute to the son of soil if I speak something on the finding from Rajasthan, which has generated a lot of interest on one of the issues pertaining to the dating or chronology as well as interpretation of rock art. Hearty congratulations are due for paying the highest tribute to Professor R.P. Vyas by initiating this annual lecture series by Sanctum, which cherished by the Sansthan, which cherished his name. I believe it is the highest tribute to his scholastic pursuit to Indian history and culture. He was a renowned historian of international repute who had several books, monoliths, and research articles to his credit, reflecting on his multifaceted personality. One of the major contributions of Professor R.P. Vyas is his PhD dissertation entitled Role of Mobility in Marwar from 18 to 1873 AD, in which an attempt has been made to give comprehensive picture of the nobles of Marwar as an institution. He has rightly remarked that the history of Marwar is the history of the nobility. Therefore, I am happy to place before you a humble tribute to Professor R.P. Vyas on his solemn occasion. Now, thereafter, I am going to the topic of the subject which I am going to talk about. It is more related to symbolism, and so initially I will talk about what exactly I mean symbolism and its importance, why it is important. Symbolism is a term closely intertwined with communication. Human beings think and communicate by using symbols. Words are symbols for material items and concepts, and written expressions are graphic, symbolic representations of those words and ideas. All writing is symbolic in nature. Therefore, proceeding with the hypothesis, one can say that all rock art embodiments of semantic expressions bear a great meaning for their authors as they attempt to communicate a meaningful entity or idea. In a society devoid of phonetic writings, all forms of graphic representations are very meaningful for the preservation and communication of thought and ideas. Rock art is also viewed as a means of communication system, and any symbolism depicting thereupon is understood to be conveying something. They certainly reflect on the aesthetic taste developed by the prehistoric community. Though many of these art forms are highly abstract in their nature, some of them can be regarded as symbolic, while others are rich in their descriptive details. Symbols are often considered as material representations of abstract concepts. There are no visually obvious association between the symbol and the entity which it represents. The typical non-iconic art is far more likely to be symbolic than their iconic entrecalls. The latter is only symbolic when the depiction of the object refers to an abstract concept. I skip some of these things which are very technical, but then I will come to the main subject from where this particular interesting object has been discovered. That is Chandravati, a small village situated about 7 kilometers south of Abu Road station in Shiroi district in the southern hilly region of Rajasthan.
While exploring Chandravati, the capital of the Parmaras of the Arbuda Mandala, that is from 8th to 14th century AD, an attempt was made to trace its earlier material relics. So that is, as an archaeologist, wherever we go, we try to understand the history of the site. As a result of that, a small triangular delta formed by a confluence of the river Banas and Chandravati, also known as Shivlong, revealed remains of microlithic factory site forming a part of upper Paleolithic assemblage consisting of blades and burins together with cores and flakes and debitage of the process of manufacturing tools. Now, those who are uh, conversant with the prehistoric cultures, they may be able to understand what exactly I am trying to say here. Now, this is the general view of, not coming there. This is the general view of the site from where this core was obtained. Now, this is the area, you can see the background, you can see the hills of Mount Abu, and then in the front there is a small rivulet or stream known as Chandravati or also a Sulon, which is the tributary of river Banas. So there is a confluence of both the rivers Banas and Chandravati further ahead. Now this is still more close-up of the same, and now this is the triangular delta which forms the confluence of both the rivers, and normally such places are associated with some historical association, and therefore we concentrate our survey or exploration to that area, and to our surprise we could collect the lithic material representing of upper Paleolithic period here in the form of chert. Chert was the main raw material, and then we have other associated tools of that cultural period. Now here you can see some of the tools scattered or spread on the surface, which includes, you can see the variety of long parallel sided chert blades, scrapers and the burins. Stylistically, they all belonging to the upper Paleolithic period, and therefore I say this particular core is belonging to the upper Paleolithic period. Now here you can see the series of fluted cores in the upper line, and then variety of scrapers, and then below the different varieties of blades, that is back blades and the burins, which are basically used for engraving or for shard cutting. Now you can see this most interesting object which we have found there, that is one of the fluted chert cores found in the microlithic assemblage at Chandravati, stylistically belong to the upper Paleolithic period, bears interesting evidence of an engraving executed on one of its flat surfaces. Now here you can see that flat surface, one of the platforms where the design has been engraved. Now the design has been engraved on the thin incrustation developed on the chert. One could engrave the design there because of its softness. Otherwise, the hardness of the chert is very hard and it was difficult to engrave. So the engraver could select such a soft surface for executing this engraved design. The design engraved on the semi-rectangular patinated platform of the core appears to be like a spiral rhomboid. It consists of a pair of parallel lines moving clockwise from the center, forming two intertwining spiraling arms. One of these arms bears a series of short diagonal lines, whereas the other one is significantly left plane to render a foreground and the background effect of the sign. The engraver has taken painstaking efforts
to make these impenetrable yet distinguishable marks. This precisely indicates that the specific intention of the artist to ensure that the significance of the visual effect of the engraved design should not go unnoticed. The engraver has maintained a constant 1 mm space between two arms of the design throughout. It was cut into the unscarred cortex of the core. The execution of the lines of the accurately fashioned with the help of microtic blade or the burin obtained from the same assembly. The portion of the platform where the design was executed measures 3.2 centimeters, while the actual engraving occupied only the patinated cortex that are just the details of the design and all that. So I'm not going, but then you can see from the actual photograph the execution carried out there. The engraved design is partially damaged, particularly the outgoing portion of the spiral rhomboid towards the flake periphery. Here I am going to emphasize this particular aspect because the design was engraved first and then it was flaked. Now that certainly shows that the flaking was done later on prior to its design. So design was the earlier one and then it was used as a core and then the flakes were converted into variety of like blades and the burins. Now I would like to say that when I discovered this particular core, the first thing I thought of Dr. V.S. Wakankar, that is Padma Shri Dr. Vishnu Sridhar Wakankar of Vikram University, who has discovered the Bhimbetka cave, and he has discovered large number of cave paintings, and he was in search of some particular object which could help him to date some of his rock paintings. So when I sent him the photograph and some little description of this particular design, he was so happy and he just congratulated me saying, you have solved my one of the major problems of dating rock painting, because many of the rock paintings are having similar designs and so stylistically they can go with the design engraved on the Chandravati core, and Chandravati core is definitely belonging to the upper Paleolithic period, and so all these paintings of intricate geometric period are going to the upper Paleolithic period. Now I'll skip some of these things. Now let us see some of how exactly there are parallels in rock art. Closer inspection of global rock art sites shows that the prefigurative and non-iconic rock art preceded figurative or iconic and most ones. So initially, the earliest rock art was assigned to the upper Paleolithic period, and there are two phases, that is prefigurative and iconic, or and the design which is engraved here. We'll just go to that. Now here this is one of the rock paintings of intricate geometric pattern, particularly found at Shamala Hills in one of the rock centers at Bhopal. So this intricate geometric pattern drawn in red color, and identical rock paintings are reported from other rock art sites throughout sub-Indian subcontinent, like sites like Bhimbetka, Kilda, then Mahadev Hills and Kathotia. You can see the similarity between the design. These are all intricate geometric patterns or some geometrical forms, and these forms are exactly similar to the design engraved on the upper Paleolithic core at Chandravati. And so one could date the Chandravati to upper Paleolithic period, so the similar paintings can also be belonging to the upper Paleolithic period.
Now, chronologically, prefigurative or non-iconic symbol motifs are followed by figurative or iconic representation. This has been attested at some places where S type of green paintings depicting dynamic dancing human figures have been observed superimposed on the intricate design of earlier paintings drawn in red color. So here you can see the superimposition, particularly, unfortunately I don't have the color slide of that, but then the earlier painting which is in intricate geometric pattern, originally which is in red color, and on this red color you have a green painting of dynamic dancing human figures that is of a green color. So green is superimposed over red, and therefore I said the intricate geometric paintings are the earliest one. There is no superimposition over that. Now these figures have been identified as phosphate motifs, and these are the earliest paintings, because even if you ask some child to draw some figure, and he will not draw a straight line, but he will line a circle or curved line. So the same feature, so these are also considered as the earliest motifs or the earliest drawings. Now these are the later paintings. Now you can see those green dynamic dancing figures drawn in green color. Now these green paintings are also reported from Bhimbetka, and Wakankar has assigned them to the upper Paleolithic period, because from upper Paleolithic strata, the site which he has excavated, he has found green terravolta, that is equivalent to the green nodule, and the green nodule is produced out of this, and this green nodule or faceted nodule reported from the upper Paleolithic strata, and that is the reason he assigned those green paintings to the upper Paleolithic period. Further interesting, because we have to correlate what is the significance of this painting and why they are there and why they are not everywhere. Particularly in the several rock shelters, the spiral rhomboid is recurring motif of the large and uncommon depiction of wild boar, elephant, rhinoceros, and deer. These large figures are identified as deified animals by Professor V. N. Mishra of Deccan College, Pune, who has excavated one of these sites. Now, interesting thing is that you just observe this body part of this animal were decorated again intricate geometric pattern of the design which is engraved on the Chandravati stone. And these are not ordinary animals, but they are identified as deified animals. Similarly, quite often the rectangular bodies of female figurines are also adorned with such intricate geometric patterns. So here again you can see the female figurine. Now you have seen earlier those green dynamic dancing figures in stick form. There is no bulky or heavy body. Only female figures are shown in bulky body, and since because of bulky body there is a space to decorate, and what is the subject matter of decoration is again intricate geometric pattern. So the design is again similar to that of design engraved on the Chandravati core. Now why these female figures? Because of physical features, particularly the braids or ladies wearing bangles. Such things you will not find in the human figure, and therefore something is associated with female fertility or female cult. The above examples of infilling of body decorations with concentric volute geometric motifs thus draws our attention to the typical design engraved on the upper thoracic core found at Chandravati. Incidentally, it allows us to conclude that the type of motif executed on the Chandravati core and its variations found elsewhere in numerous rock paintings clearly denote some connotations in the art of the hunting gathering prehistoric community. It is surprising to find such
uniformity spanning over a great distance covering the major portion of the Indian subcontinent. Erwin Neumayer, a rock art specialist from Austria, has worked extensively in India and Sri Lanka, also reported similar designs in Sri Lankan rock painting. This uniformity reflects a specific artistic tradition shared by all those whose pattern of living was comparable. From this uniformity, one could infer that socio-cultural basis of the prehistoric hunter-gatherers may be similar except for a little difference due to a specific ecological situation. A striking parallel to this intricate design pattern exists even in the upper Paleolithic art of Mezin, that is Ukraine. So Ukraine is nowadays in the limelight. So there is a fight going on, and so Ukraine has an older tradition than the Russian, and so there is a one very good example found from Ukraine, that's from South Russia, where similar patterns have been found on the mammoth ivory figurines of women besides ivory bracelets of late Pleistocene period. Now, late Pleistocene period, that means representing the fag end of the upper Paleolithic period. So this is the mammoth ivory bracelet reported from Hammond. So if you look at carefully the design engraved there on this ivory bracelet, it is exactly to the design engraved on the Chandravati core. And here lies the significance of the Chandravati core found in Rajasthan. Now, the same place at Ukraine, beside the ivory bracelet, we have some female figurines. So you can have the subject matter of those engravings also. In the context of aforesaid data, it is possible to infer that such a stylistic and formal uniformity of the design pattern, where it forms a thematic center, was possible only through long and continuous development encompassing the ideological makeup of the prehistoric society, irrespective of Indian subcontinent or Sri Lanka or Russia or in other places also. In the same cultural period, you get almost similar type of development. In this regard, the evidence obtained from the upper Paleolithic period or site at Bagor 1 in Stone Valley, Siddhi district of Madhya Pradesh, offers an important convincing clue. Here, during the excavation, fragments of triangular shaped natural sandstone with concentric laminations in the form of triangles were found placed on the slightly raised circular rubber platform. So this is slightly raised circular rubber platform exposed during the excavation by the team of the archaeologists of the Allahabad University along with Mark Kenoy from USA. So when they were excavating there, they come across slightly raised circular rubber platform. So this is the picture of that slightly raised rubber platform. So this is still further close-up of that. And on this slightly raised rubber platform, they have come across some 2-3 scattered pieces like triangular sandstone, concentric triangular sandstone. When they put together all the 3 pieces together, they could reconstruct the entire piece like this, which could have been originally erected on the slightly raised platform. Now, when it was reconstructed, the local laborers which were working with them, they started saluting that, or they started worshipping that. So the excavators were not exactly aware why they are worshipping this type of natural sandstone having concentric triangles. So they say, sir, this is our Mai, this is our modern, we can worship this as a Mai, or it's a kind of a place of fertility cult. And they said very close to this, they have a modern shrine like this.
Now you can see this is the present day shrine in the same area of Bagor. And today, even today, the Baiga or the tribal communities, they worship this type of natural sandstone, which is unmodified uh, as Mother Goddess or Mai or Shakti. So, and that is the reason on the basis of these ethno-archaeological studies or the parallels, they have identified the circular rubble platform found at Bogor as the earliest temple, of course with a question mark, dating back to the upper Paleolithic period. But it seems the tradition is as worshipping in temple is as old as the upper Paleolithic period. Therefore, based on ethnographic parallels obtained from the same region, the Shahadat structure has been identified as the earliest shrine of the mother goddess dating back to the upper Paleolithic period. The symbolic representation of the natural sandstone unmodified and the design engraved on the Chandravati core modified mark some resemblance. The origin of art, as speculated, is the derivation of archetypical nature or phosphine motif, and the design found on the Chandravati core would be one of its early variants. In this context, it is also worth noticing that the rock art of Odisha or the entire Mahanadi in that case, Mahanadi Valley, are find repeated occurrences of triangles which are resemble vulva or yoni, that is female genital organ. Bisected triangles or the triangles with a dot at the center remain the hallmark of all representations, both the paintings as well as engravings in this area. Now this is the pigmented engraving depicting vulva or yoni in rock shelter at one of the rock shelters at Ushakoti in Odisha. In fact, presence of such triangles is a common feature of rock art in many parts of the world. According to some scholars, symbolic representation of the vulva is found in ancient cultures throughout the world from Upper Paleolithic time. The earliest vulva symbols in the form of rock engravings reported from several caves of Dordogne Valley in the southern southwestern France are dated to 30,000 BP. And I had a fortune to work in one of the rock shelters in Dordogne Valley in Europe. This symbol represents fertility quality of the earth and productive and creative power of the mother god earth. They are part of universal symbol of system of symbols that persist through time across space and worldview shared by traditional cultures. It is common belief that wherever the vulva or yoni of the mother earth has been found, those sites are associated with Shakti. Now interpretations, why we give so much importance to this particular design. Mark Kenoir, while talking about ritual artifacts of prehistoric hunter-gatherers of South Asia, suggests that the carved church core from Chandravati was prepared for important socio-ritual activity. We also believe that the core was first incised with a complex geometric design and then flaked. The removal of few flakes from the core was a part of ritual. Likewise, according to the hypothesis by some Marshak, the similar engraving found on the ivory bracelet as female figurines reported from Meijin of Upper Paleolithic period represents the earliest example of non-verbal symbolic communication. So like that, there are so many scholars that opined various opinions supporting to this earliest kind of engraving supporting the female worship of female fertility. Now, the tradition has not, it is still continuing, also it is a living tradition.
I am not giving some of the examples which we have found in between for other later prehistoric or protohistoric early historic culture. But then today also you can see these various forms of tantric yantras, particularly three yantras in various temples. Particularly these are the combination of various triangles which we can identify as three yantra or Kali yantra or Yoni yantras. It is thus opined that the motivation or visual impression found in the rhomboid spiral design engraved on the Chandravati core, the Mezin ivory bracelet and female figurines, natural sandstone with concentric triangles found at Bagor, intricate geometric patterns and triangles representing yoni, either engraved or painted in many Indian rock shelters or subcontinent, manifesting the various forms of tantric yantras and identical design used by modern ritual women folk in India are those abstract forms which embody that energy, fertility, or Shakti known and worshipped even today as the Divine Mother or Mother Goddess or Goddess of Fertility. Now I'll speak some of these things. And then this tradition is again continued because some of the tribal arts, particularly the hill sauras of Orissa, they paint this sort of painting. Now they not rock painting, but they do their wall paintings of their houses on certain occasions. But why am I showing this? If you look at the border of this wall painting, you can see the border, I mean, making the border of that wall painting, they have used the same design which is there on the Chandravati core. Then even in modern glaze tiles, the people are copying such old designs, integrating the geometric pattern found in Chandravati core in various textiles. You will find so many examples of that. And then I was happened to be there in New Zealand, particularly at Auckland. I find one bronze tortoise having the same design. Then at Budapest, particularly in Hungary, during the Christmas, they sell such wall hangings. But then surprisingly, I have seen the same design there. So just see across the countries, across the areas, this particular design has captured the mind of the people or the artists. Even particularly intricate design found in the attendance register of Adi Drisha Department of IGNCI Delhi. And then in the textile also frequently you come across this. So there is a continuity of this design, and this is again in one of the textiles. So I am sorry because of the constraint of some time, I could not show some of the figures. But then in short, tentatively, I would like to show that there is significance. The discovery which we have made by the Department of Archaeology and Ancient History of the Maharaja Sahaja University of Baroda is of great significance, and it has resolved the problem of major dating of some of the rock painting which has stylistically similar design. So, and that is the contribution I think of Rajasthan in the studies of the rock art studies. And Rajasthan itself has a wealth of rock art sites, particularly Bundi. Everywhere there are large number of rock art sites, and there are people like Moraila Sharma, Arjun Karagwal, or that Sharma, who called is known as what is some is from Bundi, Cookie, yes. So there are many people, and they are working on rock art, and it's a very interesting history to talk about. So thank you very much for patience hearing, and I'm again once again thank you very much for the organizers asking me to give this ninth lecture on this great personality of this soil of Rajasthan, Professor R.P. Vyas sir. Thank you very much.
Thank you so much, sir. It was indeed a very detailed and informative lecture on symbols, not only for students of archaeological history, but also in general. We all are enlightened by a lecture about various historical designs and their similarities across countries like Ukraine, Russia, and other regions of world with Rajasthan. Thank you so much, sir. I would request our chief guest for the lecture, Srimati Suryakanta Vyas, GG, to please come up on the stage and address the gathering. सब महानुभाव आज आपकी रियासत की पुण्यतिथि पर मेरे को कुछ बोलने का रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आठवीं व्यास के प्रोग्राम में ना आऊँ और न बोलूँ, ये मेरे लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिसमें मैं व्यास जी के साथ नहीं रही हूँ। और मैं व्यास जी से काफी कुछ बहसबाजी भी करती रहती, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आज एक की कहाँ शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुंची है, ये सारी उनकी बदौलत है। ये कॉलेज के अंदर भी थे, ये सब जगह थे। तो मगराज भी इलेक्शन लड़ता, मेरा छोटा भाई, तो मैं इनसे कई दफे बहस कर लेती, यार आप इनका वोट कैसे काट दिया, ये कैसे, अरे तू समझती तो है नहीं, ये थे सिरचंद जी, साध्वी थे, ये सारे सब एक साथ थे। मैं इनके साथ बहुत कुछ रही हूँ, हर कार्यक्रम में इनके साथ रही हूँ, मगर मैं ज्यादा नहीं कह करके मैं पूरे व्यास नता और व्यास परिवार को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। शिक्षा के प्रति जो काम किया है उसके वो बारे में इतने बड़े बड़े महानुभाव बोलते हैं, मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर इतनी बढ़िया कॉलेज चल रही है जिसका कोई जवाब नहीं। कल एक भूतनाथ के अंदर फैसला गठ किया गया था, महारानी साहब पधारी थी, महारानी साहब ने मेरे को ये कहा कि आप वो रोज कुछ कहती हो व्यास व्यास, वो क्या किस्सा है मेरे को बताओ, क्यों मैं तो मीटिंग में रहती नहीं हूँ, आप भी रहते हैं। तो मैंने कहा उन्नत व्यास है जिन्होंने राजा महाराजा के टाइम काल पड़ा था, ये आपका उमेद भवन बना था जब काल पड़ा था, तो ये नथा ये व्यास है, इन्होंने कहा था कि हमारा जो धन माल जो चीज थी वो आप लो, हम जोधपुर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इनको पदवी मिली हुई है इसलिए नथा व्यास है। क्या बात कर रही है मैं, हाँ ये नता व्यास है इसलिए इनको आप राजाओं ने पदवी दी है। ये घर हो तो ना तो लोग वहां में नहीं जाते, कोई पूरा जोधपुर खाली होगा, मगर नता व्यासों ने जोधपुर खाली नहीं करके दरबार को, जोधपुर दरबार को सहयोग करने वाली ये जाति व्यास परिवार, मैं बहुत बहुत उनको बधाई दे रही हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे को भी बुलाया आपने, मगर मैं ज्यादा तो क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो खुद इनकी सवासी हूँ, मेरा ननियाल है, मेरे मामा हैं राम प्रसाद जी, मगर ये मेरे भाई हैं सारे। मगर मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि मेरे लायक कोई भी कार्य हो तो मेरे को आप जरूर कहें, मेरी ऐसी इच्छा है, अब आपके यहाँ क्या आवश्यकता है कि नहीं मेरे को पता नहीं, आप बता देना, क्यों कॉलेजों के अंदर तो जनरली क्या होता है कंप्यूटर वगैरह ये चाहिए, तो अगर आपको कोई भी चीज की अच्छी आवश्यकता हो जो बच्चों को अच्छा करा सके तो मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगी, आप मेरे को बता देना कि कैसा है। धन्यवाद जी। आखिरी लाइन पर मैं विशेष ध्यान रखूंगी और उस पॉइंट को नोट करने को बोलूंगी। मैं श्रीमती विजय लक्ष्मी व्यास जी को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ टू प्लीज प्रेजेंट गार्लैंड टू जीजी।
श्रीमती विजय लक्ष्मी व्यास प्लीज मंच पर पधारें और दीदी का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं श्रीमती शकुंतला व्यास जी का को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वे शॉल देकर दीदी को सम्मानित करें। I would request Srimati Kamlesh Vyas ji to please come up on stage and present sari to our Gigi. I would request Mr. Santosh Vyas to please come up on stage and present Smriti Chinna to I would request Mr. Akhil Vyas to please come up on stage and present a plant to Gigi. I would request Mr. Arun Joshi sir to please come up on stage and present Shrifal to our guests. I would request Shri Krishna Kumar Vyas to please come up on stage and present a garland to our keynote speaker, sir, Professor V.H. Sonaman. I would request Professor K. Vyas, sir, to please come up on stage and present Safa to sir. I would request Professor P.M. Joshi, sir, to please come up on stage and present Shrifal to Professor, sir. I would request Dr. S.P. Vyas, sir, to please present Smriti Chinna to sir. PM Joshi, sir. I request Principal Ma'am, Dr. Manorama Upadhyay Ma'am, to please present the plant to sir.
I request Shri Rajendra Prasad ji sir to please present shawl to our esteemed guests. ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि महिला पीजी महाविद्यालय की जो 3 छात्राएं हैं, निगार खानम, मर्जीना बानो और फिरदौस बानो, आपने जैसलमेर की ख्यात, जिनका संपादन डॉक्टर नारायण सिंह भाटी द्वारा किया गया था राजस्थानी में, उसका हिंदी अनुवाद किया है। तो महिला महाविद्यालय के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि ये जो छात्राएं हैं न केवल अब रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर रही हैं, बल्कि जो है वह पांडुलिपि अध्ययन करके अब उनका अनुवाद भी करने में सहयोग दे रही हैं। मैं इन्हीं तीनों छात्राओं से अनुरोध करूंगी, निगार खानम, फिरदौस बानो और मर्जीना बानो से, कि आपने जो पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है उसके कवर पेज का विमोचन जो है वो मंच पर आसीन माननीय दीदी आदरणीय प्रोफेसर सोनानबी, प्रोफेसर एस.पी. व्यास जी और राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से करावें और आप स्वयं भी वहां उपस्थित रहें, एक मेमोरी हो जाए फोटोग्राफ के रूप में। Thank you so much to our guests and very congratulations to all the 3 students. I would request Professor S.C. Vyas sir to please come on the stage, come on the podium and deliver the vote of thanks. Thank you so much. प्रोफेसर आर.पी. व्यास स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित 90वें लेक्चर सीरीज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी आदरणीय जीजी सूर्यकांता जी व्यास, राजेंद्र प्रसाद जी व्यास और आर.पी. व्यास स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित जो लेक्चर प्रदान किया, 99 साहब और सामने विराजमान मेरे गुरुजी दौड़ खान साहब, मुखरा जी आर्य साहब, ये आर.पी. व्यास स्मृति संस्थान उनकी पुण्यतिथि पर एक लेक्चर का आयोजन कर रहा है और ये सभी लेक्चर पब्लिश हुए हैं। और चूंकि ये वर्ष शताब्दी ईयर है और माननीय सूर्यकांता जी व्यास ने हमारा जो ये शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, उस समय जी ने हमें आशीर्वाद दिया और साथ में ही माननीय जज साहब जी के गोपाल जी व्यास साहब ने जो हमने उनका जो इतिहास, राजस्थान के इतिहास में जो उन्होंने अपना शोध कार्य किया, रोल ऑफ नोबिलिटी इन मारवाड़, हमने उसी विषय को लेकर एक
पुस्तक का जो है पुस्तक जिसमें अलग अलग विद्वानों के रोल ऑफ नोबिलिटी पर ही आलेख थे, जीजी के कर कमलों द्वारा उस पुस्तक का विमोचन किया गया। अभी हमने जो है जितने ये 9 लेक्चर हो गए हैं, 9 लेक्चर को एक पूरे बुक के फॉर्म में भी हम इसको जो है प्रकाशित करने जा रहे हैं। और क्योंकि हम हर तीसरे महीने, साल भर में हर तीसरे महीने में आरती व्यास जी के इस जन्म शताब्दी ईयर में हम कुछ न कुछ कार्य करेंगे, उसमें हम उस पुस्तक का भी हम विमोचन करेंगे। मैं हालांकि समय ज़्यादा हो गया है हमारा जो शेड्यूल था, लेकिन मैं सर सोनानवी साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी जो टेलीफोनिक बात हुई थी, आपने हमें कंसेंट दी और आपने इतने बिजी कार्यक्रम से आपने जो है बड़ौदा से फिर जो है चंडीगढ़ गए, वहाँ से मतलब जो है फिर यहाँ आए। आपका बहुत बहुत आभारी हैं। और जी का तो खैर आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बना हुआ है और जी की प्रेरणा से ही हम कुछ कर सकते हैं। वो जी की प्रेरणा है, जी का ही आशीर्वाद है, जी का ही देश है कि उनके जो है आरती व्यास जी के लिए। और चाचा का भी हमेशा ये जोश रहता था कि क्या है, जेठी को कह दूंगा अभी। और साथ में कृष्णराज जी कल्ला साहब, वो जो भी अरे मामूसा ने कह दिया, अब तो जी का हमेशा ही मामूसा के प्रति आरती व्यास जी के प्रति जो है उनका नहीं रहा है। और हम आपकी प्रेरणा से ही और कुछ भी, जी ने मुझे घर भी बुलाया और कहा कि आपकी क्या योजना है, मामूसा के लिए आप क्या कर रहे हो वो। और आज जैसे जी ने कॉलेज की छात्राओं के लिए जो है कंप्यूटर के लिए भी बात की है कि हम जो है वो कंप्यूटर भी प्रदान कराएगी। जी से तो हमने जब भी मांगा है हमें जी ने दिया है। और अभी जो है जो हमारे कॉलेज के लिए आवश्यकता थी, थोड़ा पानी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बड़ा कॉलेज है, पानी की प्रॉब्लम थी। जी ने सबसे पहले अपना जो है कोटे का जो भी जो है ट्यूबवेल वो जी ने हमें और ट्यूबवेल खुद भी गया है, उसमें कनेक्शन भी बिजली डिपार्टमेंट ने दिया है। और अब पाइप आते ही वो पूरी बिल्डिंग में जो है वो, तो ये जी का आशीर्वाद है। कॉलेज के लिए उन्होंने मतलब हमने वो अप्रोच भी नहीं किया और जी ने तो सीधा आदेश दे दिया वहाँ पे कि ये पहला जो है जो ट्यूबवेल हमारे महिला पीजी महाविद्यालय में होना चाहिए। जी का हमेशा ही आशीर्वाद रहा है। मैं आप सभी लोगों के प्रति आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम में दिया और सभी लोग उपस्थित रहे। और विशेष करके हमारे इन छात्राओं का जिन्होंने सवेरे 8:30 से लेकर अभी तक अपनी जो है यहाँ विराजमान है। मैं तुम सभी को बड़ा बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपका इसी प्रकार का जो है कॉलेज के प्रति सहयोग आपका जो है बना रहे और कॉलेज की उन्नति के लिए। और एनसीसी की छात्राओं को विशेष रूप से, क्योंकि आरती व्यास जी भी एनसीसी के अधिकारी थे और उन्होंने कई कैंप और वगैरह जो है यूनिवर्सिटी में थे, तो ये आप लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है कि उन्होंने अपने कम से कम 5-7 घंटे से जो है आप यहाँ विराजमान रहे। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। दूसरी एनएसएस की बच्चियाँ और फिर महिला पीजी महाविद्यालय के टीचर्स और कर्मचारी, ये सभी हम आप सभी के प्रति आभारी है कि आपने बहुत जो है अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया। हमारे
आदरणीय नानदा जी साहब, जिनका हमेशा ही बहुत जो है सहयोग रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। मैं पुनः जो है आयोजक और विशेष करके प्रिंसिपल साहब और उनकी पूरी टीम, प्रज्ञा और जो है नैना और ये सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा कार्यक्रम किया। और बच्चियाँ जो MA की है और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इतिहास विभाग के इनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कार्यक्रम में आपने अपनी पुस्तक का विमोचन करवाया, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस अवसर पर आरपी व्यास जी को अपन जो है याद कर रहे हैं। इस अवसर पर आपने अपनी पुस्तक का जो है विमोचन करवाया। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार सर। अब कार्यक्रम समाप्ति की आज्ञा चाहती हूँ। डॉक्टर प्रज्ञा प्रियदर्शी हर्ष